in the madness. Feeling any numbness? I don't think so. No, I'm not. Oh, well, there's some bruising around the eye. How many fingers am I holding up? 2. Come on, Doc, any more riddles? It's probably a bruised orbital bone. Well, can I still play? Yeah. As long as you wear this mask, it'll protect you from injuring the bone further. We can reevaluate you tomorrow and consider more options. How you feel about that, MP? I'm good. I mean, kind of looks fire, actually, so yeah. A little mask ain't gonna stop me. I'm gonna put this thing on. I'll become the best villain in the NBA. All right, MP, you want to tell the people how you got hurt? We was going too hard in practice, caught a stray elbow to the face. Things happen, so no big deal. That's fair. Well, this is the final game in our video series about beating the best teams in basketball. You got any thoughts on that? Yeah. It's kind of perfect, actually. I said it when we were stuck on the bus, but athletes always got to deal with challenges. That's what the job is, you know? So, this is just another challenge. And besides, I make this look good. That's debatable. आपको एक के साथ एक बिल्कुल फ्री दे दूंगा। दिल्ली में जब जब चिकन सिलेंडर रिफाइंड ऑयल पर आएगा महंगाई का उफान, अरे भैया मचा देंगे तूफान। मात्र 180 खानदानी मसाले के साथ 72 मसाले की चटनी के साथ एक से एक क्वालिटी दूंगा भाई जी। एक से एक आइटम खिला देंगे आपको एक के साथ एक बिल्कुल फ्री दे दूंगा। दिल्ली में जब जब चिकन सिलेंडर रिफाइंड ऑयल पर आएगा महंगाई का After this guy decided to clean up his 1950s refrigerator, the final result was almost impossible to believe. This is my 1950s General Electric refrigerator with the lazy Susan doors. The freezers froze up. I've never defrosted it ever since it's been running. This right here was starting to get frozen. Fortunately, when I got the fridge, it came with this. One of the first pages, how to remove frost. I got instructions that told me to just put some hot water in the freezer, a couple pans, and it will start to melt it. Oh, this went pretty smoothly, actually. Ice cube trays. Let's see if this still works. Oh, yeah. Look at all the room in there now. That's crazy. Old is gold, but gold never becomes old. After this guy decided to clean up his 1950s refrigerator, Ronaldo got a very different World Cup welcome than Messi. After Portugal's match against DR Congo, sections of the crowd started chanting Messi's name as Ronaldo walked off the pitch. They wanted a reaction. They wanted Ronaldo to get angry, but Ronaldo didn't even look back. He simply applauded the Portugal fans, thanked the supporters, and kept walking. No arguments, no gestures, no drama. Sometimes the best response is acting like you never heard it. Ronaldo got a very different... Feeling any numbness? I don't think so. No, I'm not. Oh, well, there's some bruising around the eye. How many fingers am I holding up? 2. Come on, Doc, any more riddles? It's probably a bruised orbital bone. Well, can I still play? Yeah. As long as you wear this mask, it'll protect you from injuring the bone further. We can reevaluate you tomorrow and consider more options. How you feel about that, MP? I'm good. I mean, kind of looks fire, actually, so yeah. A little mask ain't gonna stop me. I'm gonna put this thing on. I'll become the best villain in the NBA.
All right, MP, you want to tell the people how you got hurt? We was going too hard in practice, caught a stray elbow to the face. Things happen, so no big deal. That's fair. Well, this is the final game in our video series about beating the best teams in basketball. Mm-hmm. You got any thoughts on that? Yeah. It's kind of perfect, actually. I said it when we were stuck on the bus, but athletes always got to deal with challenges. That's what the job is, you know? So, this is just another challenge. And besides, I make this look good. That's debatable. Feeling any numbness? I don't. All right, MP, you want to tell the people how you got hurt? We was going too hard in practice. This is textbook fashion, bro. Like,
an attractive person pulling off something crazy, it doesn't get better than that. I'm not sure that's the textbook definition of fashion, but you know what? Now that I'm getting used to it, I'm on your side. I feel like you can pull it off. Yeah? Yeah. I see it. I'm styling? I see the vision. Hey, I appreciate you, bro. मेरे साथ ये चीज हर बार होती है। अगर एक आधे दिन की छुट्टी ले लूं ना, भी घटिया फोटो बनवाने की कोशिश करो, वो पहले बना देगा और बनाने के बाद जिस टाइम पे वो ब्लर होगी उसी टाइम पे उसको ब्लॉक भी कर देगा। इसी वजह से ना चैट जीपीटी से क्लाउड में ट्रांसफर भी किया था खुद को। आप इधर एक बार भी आए थे ना शॉप पे, यहाँ पे इसके रिव्यू थोड़े खराब था। तो आज की वीडियो में मैं रिविजिट करूंगा आपने कुछ ना पसंदीदा रेस्टोरेंट्स को। मैं बेसिकली रेस्टोरेंट से निकाल दिया, इसलिए मैं यहाँ पे अभी आपको बोल नहीं रहा हूँ, चल के बताता हूँ क्या हुआ। जिसका करता हुआ ये हो गया, वी आर किक्ड आउट ऑफ ललित, और देखूंगा कितने सालों के बाद वहाँ कुछ बदला है या नहीं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत जगह से चाइनीज खाना खाया, पर सच बता रहा हूँ इस जगह से घटिया चाइनीज खाना मुझे और कहीं का नहीं लगा। मतलब ये जगह जो है ना वो मेरे हिट लिस्ट में है पिछले 5 सालों से। सोशल मीडिया में पिछले 7 सालों में मैंने आप जैसे प्यार करने वाले लोग नहीं कमाए, कुछ हेटर्स भी कमाए, और हेटर्स से पर्टिकुलर में बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स की जिनकी मैंने रज की बुराइयां करी है। एडिटर प्लीज शो द ग्लिम्स, ओनर इज अ लिटिल बिट रूड, ज्यादा अच्छा नहीं है बिहेवियर, बहुत ही पहली पीढ़ी है। इस बार भी टेस्ट में भाई बहुत गंदा, हर चीज का कबाड़ बता दिया। आज मैं जा रहा हूं रेस्टोरेंट को रिविजिट करने और उनका खाना ट्राई करने हैं। लेट्स सी क्या रिएक्शन आने वाला है। अब आपको बताऊं इस वीडियो का आईडिया मुझे एक्जेक्टली इसी गली में आया था। द रीजन बीइंग मैं लास्ट टाइम आया था I'm Mr. Too Slippery. I'm with sharks, you with the fishes. Hop straight out the Bentley, I'm the biggest. Caution sign on my neck, a 60. Yeah, I'm Mr. Too Ski. Matter of fact, call me Mr. Chase That Cheese. Grams on my wrist, cost like 10 G's. I feel like Buzz got all these carrots on my teeth. Windows 5% tinted. Feeling any numbness? I don't think so. All right, MP, you want to tell the people how you got hurt? This is textbook fashion, bro. Like, there he is, the man, the myth, the legend. I'm being told MP will be wearing a face mask for tonight's game after injuring his orbital bone in pre-game warm-ups. MP told me he's not worried about it affecting his performance, saying, "I've played through injuries before. This is nothing new." I'm being told Over here, over here.
on the court tonight, Grant. A lot of talent, but also some inexperience. Well, B.A., these teams are young. Yes, they are. But here's a chance for them both to get a little more seasoning and continue to develop their respective games. And MP's made no secret that one of his main focuses this season is taking down the top teams in the league. His motivation in games like this has been clear. Well, if you ask me, MP has met his goal and then some when it comes to defeating top-level opponents. He has truly distinguished himself and his squad as a threat to anyone in this league. Considering what they've been able to do, many might just consider them the best of the best at the moment. Now a look at Detroit's starting lineup. They've got Thompson, also Holland out there, and it's Stewart in at the pivot spot, manning the middle. And he drops in the layup off the glass. And it's 8 points for MP. And that's what happens when you let MP get positioning inside. Let's check in with our reporter, Allie LaForce. I had a chance to catch up with Chauncey Billups. Much of our discussion centered around Cade Cunningham. He said that's their catalyst. They look to him to control the pace, to read the defense, and to make the right basketball play, which he usually does. He is very tough to neutralize. Back to you, Brian. Thanks for that, Allie. Pass to Hood Schifino. Back to Cunningham. And in the first, a little over a minute and a half in. And that's good. His first bucket of the game. Gritty 2 points there from Cunningham. He's added that toughness over time. Outside Kamara. Here's MP. Henderson for three. And again, it's the Trailblazers from deep. Well, look, this is how you want to start every game. 5 for 5. Come on. And here's Cunningham outside. Portland with a rebound. And it's now 11 consecutive wins for them. They are clicking right now. Well, you look at the discipline, the way these guys play under control. They never get out of balance when they find themselves in a hole. They just continue to fight, play their game, and enforce their own pace. They've played with fantastic energy from the opening tip. Yeah, they've come out with more energy and effort, and that's reflected in the score. And it's Cunningham missing. And we talk about the importance of protecting the rim. Right there, outstanding. They've been very effective so far. A balanced attack at its best. Yeah, now it's all about maintaining this lead, but you can't start playing it safe. You got to keep attacking and executing. Yeah, you want to get him going as soon as possible. Great way for him to start this game. Yeah, and I'll tell you what, if he gets into a good rhythm early, watch out. Henderson finds MP. Henderson outside. 6 to shoot. It's Avdia on the wing. Pass to Henderson. Jacks up a three. Cash. It's MP picking up the assist. Henderson's got 12 points in the game. It's Cunningham with a drive. Count it. His 3rd and 5 attempts. Scoring well this quarter. Picking up steam as he goes. And so timeout called by Chauncey Billups here. And we might see some changes. Coach potentially looking to adjust. Both teams will make substitutions. And let's take this chance to call out our Eastern Conference Player of the Week, Cade Cunningham. His offensive effort has really gone unmatched as of late. When it comes to that end of the floor, he's been accurate and explosive. Hard for any defense to keep up with that. Count it. 1 for 1 to start the game. And early on, they've been on a tear. Just getting whatever they want offensively. Yeah, I mean, this is exactly how you want to start a game, with a big offensive push. Now here's Cunningham. He has 6. And Cunningham throws it down. Well, look at him get up. Cade has some hops now. Pass to Graham. Henderson outside. There's 38 seconds left in the first quarter here. Portland moving it around. Back to MP. From outside the arc. And Henderson with the basket on the assist by MP. 15 points in the game. Out to the wing. Down low. And then Porter with
with the dunk. Yeah, it seems like Porter Jr. could do even more of this, attacking right at the rim. It's his first trip to the line. First personal foul. And he knocks down the first one. Off the line for your Trailblazers, MP. That one misses. You know, it's no secret that MP is a confident guy. But what I really like is that most of the time he lets his play do the talking for him. Yeah, that one's good. And that's 13 points for MP. Incredible. I mean, high energy in transition. Just beating the defense up the floor. Yeah, the commitment to run is paying great dividends on the break. And the foul called on MP. He's checked in for Portland. Holland, he's checked in for Detroit. Thompson comes in for Robinson. And the Trailblazers making a change here as well. Holiday is checked in. And let's check in with Allie. She's got the latest on MP. Guys, I checked in on MP's status for this game, and he will be available to play full minutes. But you may notice a change. The trainers have recommended that he wear a mask to prevent any further facial injury. But if you ask MP, he'll tell you he's just happy to get on the court. Back over to you. Well, mask on or mask off, he's focused on the mission. Thanks. We've got Tobias Harris. Drew Holiday out there with MP. Then there's Abdia. That's the group in the game for the Trailblazers. When you think about the skill of Cade Cunningham, Grant, at his height, what a combination. You know, B.A., whether it's scoring inside or seeing over the defense or just beasting on smaller guards, his 6'6" frame is certainly an advantage. MP shot is good. And now he's dropped 2 3-pointers in each quarter. Pass to Porter. The shot's good on the assist by Cunningham. Porter's gotten his second bucket. Hey, they're just getting pushed around inside. MP drives in. Oh, he's on fire. 8 for 8 and just looking relentless. Dare I say he's had a perfect game. Incredible. No misses thus far. A major reason they lead. Here's Jenkins. 9 points for him in his last game. Pass to Cunningham. For 3. Can't get it to fall. 6 for 10 now. Portland leading by 18. Holiday finds Harris. And here's MP from outside. Another 3 for Portland. Yeah, it's so rewarding as a coach to see a young guy like MP succeeding like this on the offensive end. And about 3 minutes played now in the second quarter. Thompson outside. Right side Porter. Pass to Jenkins. Launches it. Portland with a rebound. Well, this hasn't been his quarter so far. He's really struggling to get going. And the bucket is good. MP's got 26 points. I just love the ball movement. And here's Cunningham. He'll bring it up for the Detroit Pistons. When this one's in the books, they'll be off to Sacramento, taking on the Kings. That'll be game 5 for them as they near the end of a 6-game trip. Now the Blazers on the move. Oh, and the dunk by MP. Yeah, strong transition play is something MP will need to be consistently capable of in this league. And the Pistons call time here. Stewart, he's checked in for Detroit. Bucciafino comes in for Jenkins. And while we have a moment, let's see some of the contenders for this year's three-point contest. Some of the players who have a shot to make the final cut. Hey, not a bad list of shooters at all. And really, with how many threes we see in NBA games these days, some of these games have become three-point contests. You look at MP, he occupies the top spot in voting. We'll very likely see him in the three-point shooting competition. And he might already be the favorite. When he gets in a groove, he's automatic. And as we continue to count the votes, we'll update you on any changes to the list. No matter who is in it, though, it's going to be fun. Maybe this is the year we see a perfect score. Who knows? I'll be sure to be locked in on all of All-Star Weekend, especially the three-point contest. Shots good by Henderson. Just incredible. I mean, he's really making it rain out there, knocking them down one after another. Well, what I love about his three-point shooting is the spacing that he's adding. It makes things a lot easier for everyone else.
Nice rebound. Trying to match the other team's intensity right now. And MP with a basket on the assist from Graham. And that's now 30 points for MP. Well, he's been nothing short of fantastic this game, and he has his team in a great spot as this thing winds down. Stolen by MP. Here's Klingon. Banked it in off the glass. And a high-effort play from Klingon, using his power to overcome the interior defense. Here's Cunningham. And that time also a missed shot. And so it's MP making things happen for Portland. Oh, what a quarter. He was absolutely on fire offensively. All right, we'll get back to the action after this break. Please direct your attention to center court. And get ready for the fan half-court shot. Hey there. I don't know how you narrow this down. All these guys, top shooters, who can win it? Maybe we need 2 3-point contests. Well, the way the... Now we'll take a look back at our featured game. That was quite a performance for the Portland Trail Blazers. And that's a wrap on... And with the second half upon us, we'll find out if this game becomes the rout that it's threatening to be. Hey, you look at MP in this game, he's been everywhere. And the bulk of his production has been generated along the perimeter. And defensively, they're giving him too many good looks out there. They need to start running him off the line. And Detroit, let's look at who they've got. Thompson out there with Holland. Then there's Kate Cunningham. And it's Stewart in at the center position. And it sure seems like post play has evolved quite a bit over the past decade or two. Yeah, it really has. I mean, there aren't many big men who operate only on the low block anymore. But if they do, they're considered throwbacks. And keeping us updated from the sideline, Allie LaForce. Well, MP in the last matchup against the Timberwolves was outstanding. He had an unbelievable amount of points, and he made a significant contribution from beyond the arc, as usual. He was really special in that game, and they're hoping he can repeat that kind of performance tonight. Guys, back to you. That's good stuff, Allie. Impressive ability to carry his team to victory, Grant. Yeah, B.A., I was really impressed. They wouldn't have won the game if it wasn't for his attacking mindset and will to win. Yeah, and we're likely to see them go to him early on, see if he can't replicate that performance. Now here's Cunningham. He's got 14. Over Henderson. And it's Cunningham missing. They've had a slight leg up on the boards and a big leg up on the scoreboard. And this game has MP's fingerprints all over it. He is really cooking. The Pistons have got 2 of 3 from the floor in this third quarter. Stewart, right side. Holland for 3. Now. होते मोड काढलेले नसतात असेच ते मोड काढत पण बसतोय कपड्यात गुंडाळून 1 किलो म्हणजे किती होतं तसे ते म्हणून बोली कपडे जर रात्री सकाळी घातली नसते ना आणि रात्री कपड्यात बांधून ठेवले असते एवढे झाले असते सकाळी पाण्यात टाकायला पाहिजे होते दुपारी टाकली नसते तरी पण
करणार कोण? तेवढ्याची गरज नाही ना. One is off. त्याला कमी They've got a वाढवा. commanding lead. It just seems like everything is going their way. Back to Abdia. The 3 ball. Here's Klingon. And he lays it up and in. Klingon's got his second bucket of the night. They have no answer defensively inside. Detroit has gone 1 of 2 shooting from the perimeter since halftime. Here's Cunningham. Oh, plenty of contact on that shot. Officials call the foul, and he'll take 2 free throws now. The former #1 pick, Cunningham, has dealt with some injuries, but when he's healthy, he's always a factor. That one falls, so he hits both of them. Second half of play here with just under 2.5 minutes passed. Here's MP. Back to Kamara. Henderson for 3. Sends it home from 3-point land. Henderson's got 21. And credit Henderson's teammate, they got him the ball right on time. Inside, here's Cunningham, and Cunningham throws it down. BA, when he gets the rim in his sights, it's tough to stop. So aggressive and a determined finisher. Nice. Here's MP. Outside Kamara. Portland moving it around. Pass to MP. Henderson left side. Back to MP. 5 to shoot. And here's Kamara. Fires for 3. They get it back. Klingon. And good work on the boards as they picked up the second chance points. Klingon's got 4 points now in the quarter. And so it's Cunningham with it. He brings it up for Detroit. The 3 from Thompson. The shot's good. Good on the assist by Cunningham. Cunningham's got 3 assists in the game. Well, you got to like Thompson's readiness. Coaches love a guy who is always ready to get involved. Here's Klingon. Well-timed pass, and he goes straight to the bucket for the layup. Klingon's got 8 points. Easy look when the defender isn't fighting over the screen. Yeah, it's certainly worth it to disrupt the offense. Coaches notice that extra effort. Second team foul. Substitution on the court. There's 1:12 left in the third quarter. They double-team Thompson. Fires the 3. Another 3 for Detroit. Well, the defense gave that away. He's a skilled shooter who you have to contest at the arc. Harris up top. Outside Holiday. Harris a screen. To the inside. Clock at 6. MP, the pass to Harris. Soft touch off the glass. Harris has gotten his second bucket of the game. They're winning the battle down low by imposing their will. The Pistons have gotten 5 of 7 attempts in the third quarter. MP, and MP throws it down. Yes, speeding in there and getting some air time. MP with a solid jam off the drive. So that brings him up to 4 fouls. So he's forced to hold himself back a little now. Substitution on the court. Fourth quarter still young, just over a minute played. Drew Holiday out there with MP. Then there's Tobias Harris. Then it's Jeremy Grant. That's the group in the game for the Trailblazers. That one goes in. Yeah, their defense is starting to wear down. That's 3 straight buckets at the rim. Detroit has gone 1 for 3 in the fourth quarter from range. The 3 is up. Pass to Mamukelashvili. Now here's Porter. Takes the 3, and that one falls. His 5th basket in 7 tries. This defense is getting spaced out. 3 of the last 5 buckets have come from way beyond the arc. And Grant gets it to go. And we're about 2 minutes into the fourth now. Here's Mamukelashvili. They double him with Harris. Pass to Stewart. Here's Mamukelashvili. Pounded by Harris. Shot clock at 6. Porter from outside. And Detroit another 3. Well, they're still losing, but it's not because of him. He's been lights out this quarter. Outside Holiday. Now here's MP.
Well, officials have never been under greater scrutiny, so development is key, Grant. And I read now they have a training app refs can use on their phones. Yeah, I mean, we've seen the players leveraging electronics to train smarter, and it's great to see the officials making use of technology as well. Pass to Jenkins. To the middle. Here's Mamukelashvili. Goes up and lays it in. Nice and easy. That's just a great pass. Excellent vision to see the open spot in the defense and lead him to the score. From deep, MP. And the shot is good. Harris making the play. Harris has got 4 assists now tonight. That's a smart shot. I love seeing MP take the 3 in that situation. And that one's good. Cunningham. He's really finding his rhythm here. I mean, smart move to keep feeding him the ball. Yeah, when you have a guy playing like he has been recently, he's got to be the first option on every possession. Like a matador. Olay! There was no defense. That has to be one of the easier shots I've seen tonight. An unorganized defense like that is not going to help them close this deficit. And some changes here for Detroit. Holland, he's checked in for Mamukelashvili. Thompson comes in for Michael Porter. And Hood-Schifino subbed in for Jenkins. And you can see how scary this team can be when everything is clicking for them. Just a terrific performance for the And again! Night after night, he's been unbelievable, scoring the ball at will. And if he keeps it up, he's going to be top 5 in single-season 40-point games. That speaks to his unwavering consistency. Pass to Cunningham. From the arc. Pure from 3-point range. Cunningham's got 27 points. Well, as a defense, you have to expect Cunningham to take those. He's not shy at the arc. Harris passes to MP. It's good. 43 points for MP. That's an inspired ball club. They fought hard, and during the most important moments, they made big plays. Yeah, they saved their best basketball for this home stretch, and they certainly earned this one. One positive takeaway, at least they're finally showing signs of life out there. Yeah, a loss stings a little less if you at least feel like you put up a fight, but only a little. This has to feel good. They gave their fans a show and secured the W. Yep, the crowd gets to go home feeling good about the win tonight. Their team looked impressive. Pass to Holland. Here's Hood-Schifino. They double him with Brown. Holland for 3. Davis with a rebound. 1 second separating the shot clock and the game clock. Back to MP. And here's Harris. MP outside. It's Brown on the wing. And the 3-pointer goes. And he's been an ideal teammate tonight. He's really creating plenty of looks with his passing. Yeah, when there's been an open man, he's found him. And you love to see a guy dishing it like this. So it's the Trailblazers winning this one easily, showing that they're the far superior team. They win it going away. I'll tell you what, give it up for their fans. They love to watch this team dominate. You best believe they're all... MP with a double-double in tonight's victory. It seemed like whenever your team needed something, you delivered. Your thoughts? I get sick if I think I'm going to miss a game because I know my guys are counting on me to do whatever it takes. So for me, tonight was the kind of game I live for. Whatever problem we had, I solved it. So, yeah, I wouldn't be surprised if they give me a standing O when I get back to the locker. Great confidence, MP. Thank you so much. Mm-hmm. Over to you, B.A. As always, thank you, Jim. Oh my. Nice Harkin. A new look for you tonight, MP, but it didn't seem to hinder you too much. How much did the mask affect you, if at all?
You know, Miss Harkin, honestly, I felt kind of cool, like a superhero or something. Think I might keep wearing this thing when I'm healthy. Hey, and shout out to Rip Hamilton. He made this thing a vibe. Okay, thanks. I'm being told MP will be wearing a Bro, I got a great theme lined up for the second half of the season. Please tell me you're ready to go. Yep, I'm rolling. Bet.
What's up, everybody? It's your boy MP, here to announce that for the rest of this season, I'll be covering the MVP race on my social media channels. You think you're the favorite? Of course I do. But to be the best, you gotta beat the best. So I'm gonna highlight games against the top MVP contenders to show the voters why I'm the only choice that makes sense. All right. And what does being an MVP mean to you? People do have different definitions. To me, it's simple. The MVP is the best player in the league. That's it. Well, how does team success factor into it? An MVP should be able to drag any group of guys to 500. After that, it all comes down to your supporting cast. So, the MVP might be on the best team in the league, but he may not be. He just shouldn't lose any more games than he wins. And what should the viewers look for in these games you highlight? Well, you'll see me and other top contenders on the court at the same time. If you watch these games and come away thinking I'm the best player out there, I've done my job. Anything else? Yeah, the other thing you gotta look for is consistency. And MVP brings it every single day, no matter what's happening with his team or in his personal life. It's a total commitment to excellence. And that's what you'll get from me for the rest of the year if you keep locked in to Out of Bounds. All right, MP, how important are these head-to-head matchups against other MVP types compared to your... MP out. How was that? Great, bro. I think I got it. I don't mind. It sounds serious. The doctors say it's very mild, as far as these things go, anyway. Look, honey, I'd let you talk to him, but he's getting tests right now. No, Mom, I'm coming home. No, honey, he made me promise that I wouldn't let you do that. I know it sounds scary, MP, but he's okay. This doesn't feel right, Mom. Your father's a fighter. You know that, and he'll be very upset if you miss this game because of him. Yeah, that sounds like Dad. It's what he wants. Well, how are you holding up? I'm fine. I'm a little rattled, but I'm okay. I'm calling as soon as the game's over, so you make sure you have your phone by your side, okay? Of course. I love you very much, MP. Good luck tonight. I love you too, Ma. And tell Dad I love him as well, and that I'm gonna see him soon. All right, fellas, listen up. Got a tough one tonight. Luka's a huge problem, obviously. We can't let him get too comfortable early. There's only so much we can do to slow him down, so we're gonna need a big game from our very own MVP. MP, you need to go out there and do your superhero thing, all right? Don't trip, y'all. I got you. All right. I got us. Then let's go out there and get this win, all right? Bring it in. Let's go, y'all. Win on 3. 1, 2, 3. Win! Yeah, so, you know, Jokic isn't just an MVP. He's one of the greatest offensive centers of all time. Yeah. Once he gets the ball in his hands, he's gonna make something happen. His decision-making is elite, and he's one of the greatest passers in the history of our game. The second you make a mistake, he pounces. Yeah, if his 3 ball is falling, it might be curtains for us. Right. So we need to make him uncomfortable from the first possession. Front him in the post, deny the entry pass. Maximum effort, every play. I got it. And you've got to talk. You've got to talk. He'll pick apart doubles if we don't rotate. Hesitate on the switch and you're dead. Yeah. Oh, yeah. I'm ready to get after it. And I'll make sure our guys know they got to give it everything they got. Attaboy. I'll see you out there, Coach. What's up, MP?
well these two teams rack up the assists. Greg, they pride themselves on playing unselfish basketball. Yeah, both sides preach player and ball movement, getting everyone involved. It makes both teams that much more difficult to defend. Great job by MP there, staying ready, making himself a threat off the ball. And now the Lakers starting group. We've got Lou Dort. He's out there with Doncic. Jokic is out there with Randolph. Now let's check in with Allie and see what she has for us on MP. Allie, take it away. All season, we've seen MP and Luka Doncic turn in great performance after great performance. I asked MP what we can expect from him and Doncic tonight, and he said, we're going to get after it. They run pretty much everything through Luka, and for us to win, I need to be able to be the engine for our team as well. 2 MVP candidates will be the focal points tonight. They've both been on fire all season long, and we thank you for that report. Soft floater. You see how MP has really improved his craft. MP against Doncic. For the 3, Portland grabs the miss. They went to Los Angeles for their last meeting with the Lakers and came out with the victory. And really brought an impressive physicality to that matchup, drawing a ton of fouls and, of course, went on to win. When a defense is under attack like that, it can get into their head and break their will. I think that's exactly what we saw. And here is Doncic following the three-pointer by MP. That one falls. Oh, nice touch on Luka's mid-range there. The product of a lot of practice time and natural talent. Back to MP. Kamara finds MP. And the Trailblazers another 3. And early on, they looked great. They've made all 4 of their shots to start this game. Tim, you wouldn't know it now. Kamara, a late second-round pick back in 2023. Well, Kevin, he's proven himself now. His defense is what first stood out, but now his offense has taken a leap forward. Misses the jumper. Well, they missed one after 4 straight makes. Still a good start to the game. It's all about effort with Dort. He's had nothing handed to him. When he wants something, this man takes it. Basket good. MP's got 13 points. And the story here, Kevin, early on is how well they've shot the basketball. Outside, Dort. Here's Doncic. Outside for Randolph. Just 5 to shoot. And Jokic gets it to go. The assist by Randolph. Sometimes he seems to be indestructible with the finishes he can make. Jokic is a force down low. And the shot is good. And that's 15 points for MP. Uncovered at the rim, finding cracks in the defense here early on. Well, with that kind of success, I imagine they'll continue to be aggressive inside. Oh, from ultra close range, Doncic. And so Chauncey Billups decides to call timeout. He's ready to talk things through with them. And we've got a lineup change for the Lakers. And so Holiday will bring it up for the Trailblazers. It's a 5-point game. And MP throws it down. Not the kind of aggressive defense they need to cut into the lead. Yeah, you have to protect the rim, Greg, a little better. Yeah, I mean, when you're fighting back, you cannot give up plays like that. And Poole gets it to go. Well, that is beautiful work that time by Poole, getting into the lane and finishing right by the hoop. And they pick up 2. MP's got 19 points. And they've had assists now in their last 3 baskets. Lakers trail by 7. Poole on the wing. And the 3 off target. He created the opening, he got the angle. Unfortunately, that miss is just on him. MP, and he's still up. Now he is 9 of 10. Yeah, the chemistry has been terrific. Really impressed with their offensive execution. Pass to Bates, and he dunks it down. Nice there, getting the reverse. Love that. And the fans got a little bit of a show there. Guys, that one definitely had a little something extra on it. And MP throws it down.
They continue to feed the hot hand, and this kid is putting in work. For the Lakers, they won their last contest, that game against the Nets. 3-second difference between shot clock and game clock. Williams kicks to Poole. The rebound by Grant. Now, here's MP. Defense is right there. Sinks that one from the post. He's got 25. And they have owned the paint so far, and the score reflects it. Well, these days, interior offense takes great determination and discipline. And so it's Portland holding on to an 11-point cushion. Making a change here. MV's checked in. Pippen's checked in for the Lakers. Quarter number 2 with just over a minute gone. Portland moving the ball around. And here's MP for 3. Good on the triple. MP's got 28. It's critical you find a way to run MP off the line out there. He has that as a big part of his game. Taking a look at Los Angeles. Rob Williams is out there with Jackson Hayes. Then there's Jordan Poole. Then there's Doncic, and it's Pippen in at the 2 spot. Let's check in now with our Allie LaForce, who's got a story for us. Allie? Thanks, guys. Well, MP in their last game out against Milwaukee was outstanding. He ended up with 70 points, and once again, he was lights out from distance. A game that nobody will soon forget, that's for sure. How is he going to follow that up tonight? We'll see, guys. Great stuff as always, Allie. Thank you. Greg, how impressive was it watching him completely take over? Unstoppable. They won that game because of his effort and just his overall relentlessness. Well, he really lit it up. Maybe we'll see a repeat performance tonight. And the triples keep falling, guys. That's 3 in a row. Quarter 2 and just under 2.5 minutes gone by. Pippen is doubled. Doncic passes to Poole. Nice pass, nice catch, and a resounding dunk. Yeah, typically Poole is showing you that soft touch on the jump shot, but every now and then he can finish with authority. Close in, no stopping MP. He has been in a great flow tonight, converting at a high rate. The drive by Doncic. Out of bounds, Portland takes possession. Yeah, mistakes like that have been the story of the game. They lack cohesion offensively. Henderson's checked in for Drew Holiday. Jokic has checked in for Los Angeles. That shot wide open. Avdia's got the lead up to 13 now for Portland. 1:53 left in the first half of basketball. Lakers have gone a superb 7 of 7 from the field here in the second. Pippen, the pass to Jokic. And one way players look to expand their game, adding counter moves to keep defenders off balance. Greg, what was something you added that really gave defenders pause? You know, the snatch back pull-up, using your speed to kind of get the defender going downhill. And then you slam on the brakes and just create that separation to then go into attack mode. Pippen is doubled. Fires the 3. Avdia with the rebound. And they had some botched coverage that turned into no coverage. Williams with the block. The reach of Williams is outstanding. He uses it to perfection to deny shooters. And Jokic throws it down. Ooh, he put a little extra on that one. He does. He doesn't usually finish soft either. Obviously, he can when necessary, but not that time. Back to MP. Here's the floater, and the shot goes in. MP's got 40 points. MP knows how valuable that floater can be to neutralize backline defenders. To the middle, the kick out to Williams. And here's Poole for 3. MP grabs the miss. Trailblazers leading by 13. Harris dishes to MP. MP powers through the contact inside. And another bucket for him. What a quarter he has had. And so Doncic will bring it up for the Los Angeles Lakers. They're coming off that win against the Nets. Yeah, and in that one, they were aggressive, but also efficient. The exact balance you're looking to achieve. It really showed you how together they were as a team, playing for one another.
unwilling to let up even for a moment. That's his killer instinct, just fanning the flame. Yeah, he can taste a win right now. He's just trying to close it out. MP has been leading the charge for the Trailblazers. He witnessed him delivering a series of three-pointers as he notched 3 total in the quarter. Don't go anywhere. We'll be right back. They've made it fun to watch. Some of the best players in the world doing what they do best, Ernie. Yeah, when everything clicks, it can... And how about we move it on over for a preview of who we might be seeing in the dunk contest. And that is it for halftime, folks. And with a big gap on the scoreboard, the second half begins with very different goals for these teams. One side trying to mount a comeback, one side trying to protect their lead. You look at MP in this one, he's been everywhere. Oof. That first half looked like a dunk contest mixtape was just destroying the rim. That is explosive. He can jump out of the building. Just incredible. On the block, you'll see Kamara and Klingon. MP out there with Henderson, and it's Avdia in at the small forward. That's the group on the floor for Portland. Lakers trail by 20. Now let's take a minute to talk to Allie LaForce courtside. Allie. Thank you, guys. The Lakers are always thinking title. Coach J.J. Redick said, everything I've ever done in this sport has been crystallized into how can I win a championship? I got close as a college player and as an NBA player. My hope and goal is to bring the Lakers their 18th NBA championship as head coach. Kevin, back over to you. Yep, eyes on the prize. All right, Allie, as always, we thank you. Pass to Jokic. Lets the 3 fly. And again, the Lakers no good. It's a +5 advantage for them in rebounding after that one. Well, young players like MP know that if they run the floor, they will be rewarded. Outside, Dort. The 3 for Doncic. And the rejection by MP. At this point, they might... म्हणतो कोणाला अजून काय बोलतो 7:30 ची गाडी आहे. परवा असेल तू सोडून जाणार काय तुला जावं सोडायला. एसीने झालं ना नाही एसीने झालं ना हा पैसे चालत नाही
कुठून भायखळ्यावरून भायखळ्यावरून रिटर्न मी एकदा गेलेलो ना 5च्या अंबरनाथने एवढे लोक चढतात होतं तिकडे जागा पण मी गेलो सीएसटी ला गेलो मला वाटलं फास्ट होती गाडी आसनगावची आणि बदलापूर होती मी ती सोडली जे 3 गाड्या लागलेल्या एक आसनगाव होती साधी आसनगाव होती एक बदलापूर होती आणि एक कल्याण फास्ट होती मी मला वाटलं फास्ट आहे ठाणे पुढे स्लो निघाली आता बघितली तरी आता येताना अशी ब्राऊन कलर असेल ना तर सेमी फास्ट असते नाही पिंक कलर होती लेडीज स्पेशल पिंक कलर असेल ना तर सेमी फास्ट असते लेडीज स्पेशल मला आधी वाटलेलं लेडीज स्पेशल म्हणजे पूर्ण गाडीच ही आहे ते 2-3 डबे असतील पुढचे 4 डबे कल्याण साइड वरून बदलापूर आसनगावने गेलो ना तरी पण उतरायला हे होतं लांबच्या गाड्या पकडल्या पुढच्या गाड्या संध्याकाळच्या ऑलरेडी सुट्टीच्या दिवशी ठीक आहे एकदम लवकर पण ठीक आहे 3-4 वाजे 4 वाजेपर्यंत ठीक आहे 3 वाजता लोक सुटतात ना शिप असते काही लोक शिप काम करणाऱ्या कंपार्टमेंट 3 वाजता सुटतात त्याच्यानंतर गाड्या उठा किती बोंबलतात आहे सिनियर सिटीजन पण उठा ना लक्षात देत नाही आई ग माझ्या तिकीट काढले लुंगी कुठे आहे मला पॅन्ट घालायला लागेल लुंगी वगैरे सगळे फोन केले होते मला तुला कॉल करतो संध्याकाळी जेवायला जायचं सकाळी जाऊ परत पुढे मागे परत बोलवतो तुला सोडायला जायला 7:30 गाडी आहे मला म्हणजे तिथे सोड आणि तू ये स्टेशनला ठीक आहे तिथे म्हणजे एसटी स्टँडला तू काय गाडी लागेपर्यंत थांबू नको तिकडे ठाण्याला तिकडे नाही आता वंदना टॉपिकला त्याच्यापेक्षा जवळ आहे मला सोड नाहीये तू काय थांबू नको गाडी लागेपर्यंत त्यांची हालत आहे उद्या परवा त्यांची हालत कशाला उद्या अर्धा घ्या उद्या पुरता नेऊ जो खराब होणार नसेल ना तो उद्या पण घेऊन जा ना आणि परवाला थोडा ठेवा फक्त कांद्याची पात तेल कोथिंबीर जास्त घेऊन गेले की जास्त टाकतात मग अर्धा उद्याला नाही यायचा अर्धा परवाला नाही तर त्यांना सांगायचं हा परवाचा आहे सामान एकत्र नाही द्यायचा सांगायचं हा परवाचा शिंदेला पगार दिला ना चायनीज वालेला तो आज गायब झाला आलाच नाही आता 9 वाजता आला
मस्त आला ना. तो तिथेच राहतो ना. रात्री गायब झाला तर डायरेक्ट सकाळी आला तो. तू गेला असेल जुगार बिगार खेळायला आणि तो दारू पिऊन पिऊन पहिले गेला होता जुगार खेळायचा ना. नाही तर दारू पिऊन पडला असेल कुठं तर जागा आली तर आला असेल. बरं झालं पाहिलं. तुला चायनीज खायला भेटला असेल. तुला चायनीज तर सगळं झालं. मी तर चिरा राईस आई गं. दूध होता ना. हम्म. 7 दूध 4 दही. लिहिलेस? हम्म. लिहिलेस? तुम्ही लिहिले ना. लिहिले ना? हम्म. मग उद्या जास्त सामान घेऊन जाऊ जरा. शनिवारी मग हलका घेऊन जायला तुम्हाला. हम्म? सामान कल्याणवरून. हम्म? एक दिवसात आपलं काय होतं शनिवार पुरतं. कलरचं कांदा पत्र मिक्स करून घेऊ नका हो. त्याची पिवळ्या पडतो. हम्म. परवा ती दुधी घेतलेली त्या दिवशी काय वजन होता बॅगेचा. अशी दुधी घेतलेली ना आणि एकदम खाली ठेवलेली ना दुधी. मग ती लागायची पण खांद्यात. हम्म. मम्मी दिलते जे दिलते. चीज आणू. चीज आणू. आलू भुजिया आणू. भुजिया.
जरासा आहे मोठं पाकिट आहे. अल्टिमेटम दिलाय बीएमसीवाल्यांनी, भाडा भरलेला नाही. आपल्याला तो तुम्हाला लेटर दिलाय ना, सही केली तुम्ही. हा 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 तो तिला फॉरवर्ड करून द्या. नाही परत बोलून मला काय पाठवली नाही त्यांनी. पाठवली मी त्यात काय केलेलं आहे. कॅन्टीन 11 जून 24 ते 10 जून 25 पर्यंत चालली आहे. कॉन्ट्रॅक्टरनी महिन्याचा भाडा नाही भरलेला आहे. बीएमसीने आधी पण रिमाइंडर दिलेला आहे राहिलेल्या पेमेंट बद्दल. काही कमतरता कॅन्टीनच्या ऑपरेशन मध्ये हे आढळण्यात आली आहे. कॉन्ट्रॅक्टरनी रिन्युअल टाकलाय पण बीएमसीचा मन नाहीये कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू करण्यासाठी. ते सूर्यवंशी आता श्रीलंकेची आणि इंडिया ए टीमची कधी मॅच आहे? काल झाली ना श्रीलंकेची. इंडिया श्रीलंका. इंडिया श्रीलंका नाही, इंडिया अफगाणिस्तान झाली ना. म्हणजे काय की एकच झाले ना. लेटर डिमांड करते की 6,62,500 रुपये भरण्यात यावे. 23 जून. 6 लाख थोडं आहे. मग 62,300 काय 62. 23 जून 25 62,000 किती? 62,658. 82. 62,658. 658. बरं 1000 लाख केले काय?
हम्म, इंडिया फायनलला गेली आहे. इंडिया ए फायनलला गेली आहे. इंडिया ए. इंडिया ए ना. ते तिघांची मॅच चालू आहेत ना सिरीज. त्यात इंडिया ए आता फायनलला गेली आहे. आता उद्या श्रीलंका अफगाणिस्तानची मॅच आहे. जो जिंकेल तो फायनल मध्ये खेळेल इंडिया ए बरोबर. इंडियाने किती श्रीलंकेवर एकच मॅच खेळले. एक श्रीलंका बरोबर 2 मॅच खेळलो इंडियाने. एक पहिली मॅच होती आणि एक दुसरी मॅच त्यात ते जिंकले. कधी आहे ती फायनल? संडेला या रविवारी. उद्या जो जिंकेल तो खेळेल इंडिया बरोबर. आणि श्रीलंकाच नक्की पकडा, कारण अफगाणिस्तानचा तर रन रेट खूप खराब आहे. श्रीलंकाचा +5 आहे रन रेट आणि अफगाणिस्तानचा -1.6 आहे. इंडियाचा प्लस मध्ये आहे. इंडियाचा +5.5. फायनलला गेली प्लस मध्ये असणार. इंडियाच्या झाली ना मॅच, आता काय कमी जास्त नाही होणार.
यार पिछले 2 दिनों में इतनी सारी क्यूट चीजें सामने आई है ना, राम मंदिर बना नहीं उसमें 200 करोड़ का घोटाला पहले हो गया। The 3-member SIT has now arrived in Ayodhya to investigate. The Ram Temple donation case. अपने सीजेपी वाले एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट तो कर ही रहे थे। राहुल गांधी को उस पूरे फॉर्मेट में थोड़ी सी कमियां लगी तो आदमी ने कौन सा ठीक कर दिया। Let's go, it's time to Rahul Gandhi! कितना प्यार करते हो और जोर से बताओ आवाज के साथ, come on! पूरी सारी बकैती चल रही है। एक तरफ दूसरी तरफ मोदी जी गए हुए हैं G7 अटेंड करने और वहां पे क्या अपडेट्स आ रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे तब थर्ड आई में। सबसे पहले न्यूज़ आ रही है नीट एग्जाम की तरफ से मार्केट के अंदर अफवाह फैल चुकी है कि वो दोबारा लीक हो चुका है और इस न्यूज़ को देख के बच्चे कह रहे हैं कि भाई किताब खोले रखे बंद कर दे दोबारा। अभी नीट का एग्जाम ना सोशल मीडिया के लिए मीम बन चुका है। मान के चलो कि अगर लीक हो भी गया हो ना, अभी एग्जाम डेट तक बीजेपी वाले नया पेपर छपा देंगे। तुम समझो इस बार प्रेशर तुम पे नहीं है, तुमसे ज्यादा इस आदमी पे है। अगर इस बार पेपर लीक हो गया ना, ये आदमी एनटीए के आधे लोग निकाल देगा। जिसका एक बहुत बड़ा रीजन है कोकरोच जनता पार्टी है और उसका ग्राउंड लेवल का भी रिजल्ट दिखना शुरू हो गया। देखो कोकरोच जनता पार्टी के ग्राउंड के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कभी उनको पीट दिया जाता है, कभी उनको बोल दिया जाता है कि भैया ये तो एंटी नेशनल लोग हैं, ये वो लोग हैं जो मखाली का सपोर्ट कर रहे हैं, पर स्टिल गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना और वो चीज बहुत क्लियर दिख रही है। देखो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था कि रिजाइन चाहिए, रिजाइन तो अभी तक नहीं हुआ, शायद नहीं भी होगा। रिजाइन का भी बहुत बड़ा एजेंडा ये था ना कि सिस्टम सही कर दिया जाए। अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि सिस्टम को एकदम तंदुरुस्त कर दिया गया, मैं ये बोल रहा हूं कि सिस्टम को सही करने की कोशिश जरूर की जा रही है। जैसे पीछे लेटेस्ट न्यूज़ निकल गया कि टेलीग्राम को बैन कर दिया एग्जाम के लिए। देखो अभी 50% अच्छा मूवी है, 50% गलत मूवी है, दोनों को
समझो, क्योंकि सरकार का बोलना है कि जब भी पेपर लीक होता है तो टेलीग्राम के ऊपर होता है तो हम प्लेटफॉर्म को ही बैन कर देते हैं। हमें मिनिस्ट्री के अंदर बैठ के जो लोग डिसीजन ले रहे हैं, एक्चुअली कितना क्रेजी लोग हैं ना, वो जो एक आदमी 15-15 लाख रुपए हवाला से ट्रांसफर करके पेपर निकलवा ले रहा है, वो वीपीएन नहीं लगा सकता। बैन मतलब क्या, वाईफाई और सिम के ऊपर चलेगा नहीं ना, वीपीएन फ्री में मिल जाता है। ये क्या फुद्दू कोशिश है? तो ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं, आधे देश का ओपिनियन है, पर इसके अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम को एक्चुअली बैन करना सेंसिबल नहीं है, उसके फीचर को डिसेबल करना सेंसिबल। समझो कि उसके अंदर फीचर होता है जिसके अंदर आप लोग कोई भी फाइल कोई भी डेट को शेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आज 11 तारीख है, मैंने 11 तारीख को तुम्हें पीडीएफ शेयर कर दी। जैसे नीट का एग्जाम हो जाएगा, सोचो आज 25 तारीख है, नीट का एग्जाम हो चुका है, मैं क्या करूंगा, जाके उस पीडीएफ को एडिट करके पीडीएफ को रिप्लेस कर दूंगा। तो जब मैं पीडीएफ को एडिट करूंगा, रिप्लेस करूंगा, तो वहां पे पीडीएफ रिप्लेस हो जाएगी और दिखाएगी कि 15 तारीख को भेज रखी है, जिससे मार्केट के अंदर अफवाह फैला सकता हूं। पेपर होने के बाद देखो पेपर तो पहले लीक हो गया था, जो एक्चुअली में पेपर लीक को नहीं प्रोटेक्ट करता, जिससे कल दोबारा तमाशा बनाया जा सकता है, सरकार के ऊपर ब्लेम लगाया जा सकता है, सरकार फ्यूचर प्रूफ होना चाहती है। जैसे मैंने बोला कि अभी तुमसे ज्यादा प्रेशर सरकार के ऊपर, उनको कि भैया दोबारा हक ही नहीं सकते, क्यों नहीं हक सकते हैं? जस्ट बिकॉज़ ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी। इस आवाज को इतना ज्यादा बड़ा कर दिया गया कि उनको पता है कि अगर अभी हगा तो लोग सड़क पे मिलेंगे, इससे डबल फिर रिजाइन भी करना पड़ेगा। रिजाइन करवाने के लिए बहुत मुश्किल, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर अच्छा काम नहीं कर रहा है। मिनिस्टर के बारे में क्या बोलोगे? थोड़ी बहुत बात रेलवे मिनिस्टर कर लो, फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर कर लो, होम मिनिस्टर पे कर लो, पॉइंट क्या रेज हो जाएगा कि अगर आप लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हो तो बीजेपी के राज के अंदर भी आप उनके नेताओं को अकाउंटेबल ठहरा सकते हो। और ये लोग सबसे ज्यादा इसी से बात है कि भैया हमको अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए, अगर हमने हक दिया तो। कभी जब से एंटी सरकार आई है, इनके एक मिनिस्टर ने रिजाइन किया है क्या? तुम लोग रिसर्च करके देख लो, तुम्हें एक भी नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि इनको एग्जांपल सेट नहीं करना। इनको लोगों को पावर ही नहीं देनी है कि तुमने हमको चूज तो कर लिया पर तुम हमको रिप्लेस नहीं कर सकते हो। तो सरकार के बहुत सिंपल एजेंडा है, सबसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को दबाया जा सके, उसको कम से कम लाइमलाइट मिले। दूसरा उनका एजेंडा ये कि इस बार एग्जाम अच्छे से करवा दो, इस बार कोई फर्क नहीं होना चाहिए। और तीसरा वो ऐसे एक्शंस भी ले रहे हैं जो थोड़े से ग्लोरीफाइड लगे। आपको एक फीचर बंद करवाना चाहिए था, आपने पूरे प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया। प्लेटफॉर्म को बैन क्यों किया? क्योंकि आप किसी पे ब्लेम लगा सकोगे, भैया तुम्हारी वजह से होता है। उसके बाद टेलीग्राम के सीईओ का ये बोलने कि भैया तुम लोग हम पे नाम क्यों लगा रहे हो, इसको चोरी करनी है, वो इसलिए थोड़ी हो जाएगा कि क्या टेलीग्राम बंद हो गया, वो व्हाट्सएप पे भेज देगा, वो गूगल ड्राइव पे लिंक भेज देगा। और प्लेटफॉर्म को बैन करना कभी सेंसिबल होता ही नहीं है। ये तो वही बात है ना कि मॉल के अंदर चोरी हो सकती है, काम करते मॉल ही बंद कर देते हैं। फिर मैंने देखा था कि सड़क पे लोग ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं तो सड़कें बंद कर दो। जो चीज गलत हो रही है उसको रोकोगे ना, ऐप थोड़ी बंद कर दोगे। और जब भी तुम लोग टेलीग्राम के सीईओ का ये ओपिनियन सुनोगे तुम्हें सेंसिबल भी लगेगा। वरना एक चीज समझो, हम लोग हमारी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते आते हैं और कर भी लेते हैं। एक बिजनेस ओनर जिसको ये चीज दिख रही है कि भैया सरकार मेरे नाम पे खुद का फायदा उठा रही है, उसके बोलने की पावर उतनी नहीं होनी चाहिए। और ना ही हमें उनकी अपनी सुननी चाहिए। तुम लॉजिक समझो, चाइना का एक बहुत बड़ा एग्जाम है जिसको 1.3 करोड़ समथिंग लोग देते हैं, उसका नाम है गांव का। और जब भी वो एग्जाम हो रहा होता है, डीप सीक हो गया, फिर जैसे जितने भी एआई टूल्स हो गए ना, सबको बैन कर दिया जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया आपने एआई टूल्स को बैन कर दिया तो उसके बाद कोई भी बंदा चीटिंग नहीं कर सकता या फिर रिसर्च नहीं कर सकता, अगर उसके हाथ में पेपर आ जाए तो स्टिल कर दिया जाता है, क्योंकि उसको प्रिकॉशंस लेना बोलते हैं। प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा फुद्दू है, हम लोग अपनी सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पर एक बिजनेस ओनर बाहर बैठ के इस तरह की बातें बना रहा हो, कह रहे हैं कि भैया इसके अंदर तो जियो वाले मिले हुए हैं, इसके अंदर रिलायंस वाले मिले हुए हैं, इनका व्हाट्सएप से कोई टाई अप चल रहा है। एक्चुअली में टेलीग्राम का सीईओ ब्लेम लगा रहा है कि बैन इसलिए किया गया क्योंकि रिलायंस के अंदर मेटा ने इन्वेस्ट कर रखा है। अगर जेन्युइनली ये चीज करनी होती तो इससे पहले इनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी। बहुत ही फालतू आर्गुमेंट है, मतलब ऐसा आर्गुमेंट है जो पता नहीं क्यों ही ध्यान डाइवर्ट कर रहा है। लोग क्यों ही इसको एंटरटेन कर रहे हैं, लोग क्यों ही इसको बोल रहे हैं हां रिलायंस भी मिला हो सकता है। सरकार के अपने रीजन से सरकार को मार्केटिंग गेम खेलनी है, सरकार को जो भी करना है उसके अंदर प्राइवेट कंपनी जो कि फॉरेन कंपनी उसका इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। क्रिटिसाइज करने वाले लोग बैठे हम बैठे हम करेंगे, किसी को इतनी लेवरेज दे देना, अगर कोई ट्वीट कर रहा है तो उसके ऊपर जाके रीट्वीट कर देना, उसको भगवान मान लेना, इन चीजों को भी अवॉइड किया। और पेपर लीक की बात चल रही है तो राहुल गांधी ने इसके ऊपर कॉन्सर्ट किया, उनकी लैंग्वेज में उसको क्या बोल रहे हैं, प्रोटेस्ट था, पीपीटी डिस्प्ले था या फिर कोई मीटअप था, हमें तो समझ नहीं आया। भाई पूरी ये लोग कॉन्सर्ट की ही दे रहे थे। अभी कॉन्सर्ट में क्या हुआ, क्या डिस्कशन हुई, काफी वैल्यूएबल कॉन्सर्ट था, वैसे काफी अच्छी बातों पर डिस्कशन की गई, काफी अच्छी चीजें एक्सप्लेन करी गई, उसके ऊपर हम लोग आगे बात करते हैं। पर एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट उठ रहा है, लोगों का बोलना है कि कॉकरोच जनता पार्टी जो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, धर्मेंद्र प्रसाद के रिजाइन का वेट कर रही है, वही चीज राहुल गांधी कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर काम क्यों नहीं करते? दोनों के दुश्मन सेम है तो दोनों दोस्त नहीं हो जाने चाहिए। और ये चीज देख रहा हूं, मैं इसी से एग्री नहीं करता। हम लोग एक चीज समझो कि कॉकरोच जनता पार्टी तो अपना प्रोटेस्ट कर ही रहा है, और मैक्सिमम जगह अगर तुम देखोगे पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सरकार उनको हर तरह की परमिशन दे रही है क्योंकि वो चाहते हैं मुद्दा बढ़ाना, क्योंकि अभी तक ये लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बायस प्रूव नहीं हुए। जिस दिन इसको कांग्रेस ने ज्वाइन कर लिया ना, कांग्रेस मूवमेंट बन जाएगी, कॉकरोच जनता पार्टी मूवमेंट नहीं रहेगी। और कांग्रेस ने इसका कॉन्शियस कॉल लिया कि भैया हम लोग इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, हम अपनी सेपरेट मूवमेंट बनाएंगे। ये बहुत अच्छा मूवमेंट, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के मूवमेंट से जो भी लोग बीजेपी को सपोर्ट करते थे वो जब भी टूटेंगे ना, उनका सेकंड ऑल्टरनेटिव कांग्रेस ही रहने वाला। बट अगर कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर ले तो पूरा का पूरा मुद्दा पॉलिटिसाइज हो जाएगा। और उसके बाद मीडिया को एक अपर हैंड मिल जाएगा चीजों को दबाने का, सरकार को एक अपर हैंड मिल जाएगा चीजों को दबाने का, बोलने का कि भैया ये सारी कांग्रेसवादी है, ये बोलने का कि भैया नेहरू की गलती है। तो ये बहुत मैच्योर बोलेगा कि इन्होंने अभी तक मर्जर नहीं किया, क्योंकि प्रोटेस्ट तो कॉकरोच जनता पार्टी वाले कर रहे हैं, कांग्रेस वाले भी कर रहे हैं। कांग्रेस का यूथ विंग है, वो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका हाल ये था। जहां कॉकरोच जनता पार्टी वालों को पीसफुली प्रोटेस्ट करने दिया जा रहा है, उनको पानी पिलाया जा रहा है। इतनी गर्मी का टाइम है, सरकार ने सोचा बेचारे थक गए होंगे, कांग्रेस वालों को वैसे वोट कमाते हैं, सबको पानी देके पानी ऐसे डाल जैसे पौधे हो बेचारे। पर ये चीज कॉकरोच जनता पार्टी को क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अभी तक ये लोग पॉलिटिकली बैक नहीं है। तो सरकार कांग्रेस को अटैक करेगी ना तो लोग कांग्रेस एसोसिएट होने पे डरेंगे। जब लोग एक इंडिपेंडेंट पार्टी को अटैक करेगी ना तो लोग कहेंगे भाई ऐसे कैसे हमारी बात बता सकते हैं, हम साथ चलेंगे। इन दोनों चीजों के ऊपर फर्क है, दोनों अभी तक आइडल सिचुएशन के अंदर ही चल रही है। और इन दोनों आइडल की बोलो कॉकरोच जनता पार्टी वाला तुम्हें पता है, कांग्रेस वाला सुनो। राहुल गांधी ने जो भी अपना मीटअप कॉन्सर्ट जो भी रखा उसका एक एजेंडा रखा गया, मैं इसमें पॉलिटिकल कन्वर्सेशन नहीं करूं। ऑल्दो वी नो कि भाई कोई पॉलिटिशियन है जहां पे जाएगा कांग्रेस पार्टी से लिंक दिखाया जाएगा, होगा भी वो सारी चीजें एक साइड। बट कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले उस आदमी ने कॉन्शियस डिसीजन लिया, उसने अनाउंस किया कि ना मैं बीजेपी की बात करूंगा, ना ही कांग्रेस की बात करूंगा, ना ही सरकारों की बात करूंगा, ना ही हमारे कोई सरकारी झंडे, ना ही हम लोगों ने यहां पे कोई पॉलिटिकल फ्लैग्स या लोगोस लगा रखे। ये पूरा का पूरा मीटअप या कॉन्सर्ट जो भी हम लोग करने वाले हैं इसके अंदर हम लोग सिर्फ देश के युवा की बात करेंगे और वही करेंगे। This is not a political meeting. This is a meeting about you. I will not say the words BJP, Congress, politics, elections. They will not come out of my mouth this evening. और अगर तुम लोग भीड़ देखोगे तो क्रेजी भीड़ आ रही थी वहां पे। सरकारी से इतनी डरी दिख रही है, कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले उनके पोस्टर उतार रही है। एक वीडियो वाले हो रही थी इसके अंदर एक आदमी छोटा आदमी घूम रहा है, सारे राहुल गांधी के पोस्टर उतार रहे हैं। नीट का एग्जाम में क्लास की बोर्ड की बड़ी जिसमें सारे लाइन मारना चाहते हैं। बाकी जो राहुल गांधी ने कॉन्सर्ट किया उसके अंदर तीन बहुत अच्छी बातें जिनको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। सबसे पहले अगर तुम लोग कांग्रेस पार्टी की कम्युनिकेशन देखो ना, वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। उन्होंने प्रॉपर हाई ग्राफिकल पीपीटी बनाई थी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए। वो बच्चों को स्टेज पे बुला रहे थे और एजुकेट कर रहे थे कि भाई तू अगर यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है कितने परसेंट चांस है, अगर नीट का एग्जाम दे रहा है तेरे कितने चांस है, रेलवे में कितने परसेंट चांस है, आईआईटी में कितने परसेंट चांस है। और वही इंफॉर्मेशन मासे तक पहुंचाई जा रही थी। जैसे वीडियोस हम लोग खुद बनाते हैं एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन बहुत ज्यादा खराब है, तुम लोग इस कंपटीशन के अंदर पड़े हो, वो वर्थ ही नहीं है, गवर्नमेंट एग्जाम नहीं करवाती, एग्जाम करवाती बहुत ज्यादा डिले कर देती है। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर आदमी पूरी वीडियो याद करके आया था। और उसके बीच में दो बहुत बड़े चेंज किए गए, उनको भी एड्रेस करना जरूरी है। राहुल गांधी का बोलना था कि 23 लाख कैंडिडेट नीट का एग्जाम देते हैं, जिससे तो सरकार पैसा कमाती है, दैट इज 1.32 लाख करोड़ रुपीस। अभी कुछ स्टेटमेंट के अंदर ऐसा था कि जितना पैसा स्पेंड किया जाता है, कुछ स्टेटमेंट में ऐसा था कि सरकार जितना पैसा कमाती है। दोनों का डिफरेंस है, दोनों बता देता हूं। एक पैसा होता है सरकार फॉर्म फीस के नाम पे लेती है, दूसरा पैसा होता है कि अगर मेरे को नीट का एग्जाम देना है तो कोचिंग होगी, हॉस्टल होगी, सारी चीजें मिलाकर मैं कितना पैसा स्पेंड कर रहा हूं। और मेरे साथ साथ 22-23 लाख स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, वो लोग कितना पैसा स्पेंड कर रहे हैं। तो राहुल गांधी का क्लेम था कि 23 लाख बच्चे 1,32,000 करोड़ रुपए हर साल स्पेंड करते हैं, और वो भी सिर्फ नीट एग्जाम निकालने के लिए।
के लिए जिस दिन आपके सारे होटल कोचिंग माफिया फीस रहना धोना खाना पीना सब आ जाता है और अगर इसका एवरेज आउट किया जाए तो 5,80,000 रुपए पर बच्चा काउंट किया गया। देखो नंबर काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाए गए क्योंकि हर बच्चा नहीं कोचिंग लेता है, हर बच्चा नहीं हॉस्टल में रहता है, हर बच्चा नहीं 6 लाख रुपए हर साल नीट के एग्जाम के स्पेंड करता है। बट जो 1,32,000 करोड़ का नंबर लाया गया इसको कंपेयर पता किससे किया गया? हमारे पूरे देश के एजुकेशन बजट से। ये बोला गया कि जितना फैमिलीज मिलकर सिर्फ नीट एग्जाम के लिए पैसा स्पेंड कर रही है ना उतना पूरा देश स्पेंड करता है एजुकेशन बजट पे। दूसरा शॉकिंग पता क्या था? नीट, जेईई, एसएससी, यूपीएससी और आरआरबी ये पांचों एग्जाम्स के ऊपर जितना भी पैसा स्पेंड किया जाता है वो 3.5 लाख करोड़ रुपए। और हमारे देश के अंदर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, लेबर, साइंस ये पांचों सेक्टर्स को मिला दिया जाए ना तब भी इतना पैसा स्पेंड नहीं करती है सरकार जितना ये लोग कर रहे हैं। और ये सारी जो चीजें दिखाई गई जिसमें बहुत ही ज्यादा अच्छे इंफोग्राफिक्स के साथ प्रॉपर पीपीटी के साथ दिखाई गई थी जिससे बाद में हो गया प्रॉपर रिलेटेड विद कॉन्टेक्स्ट। मैंने ऑलमोस्ट पूरा कॉन्सेप्ट अटेंड किया, मुझे काफी सही लगा। पूरे मोमेंट को पॉलिटिक्स से दूर रखने की कोशिश करी गई जिससे ज्यादा बच्चे जुड़ सके क्योंकि जो भी बच्चे जुड़ेंगे राहुल गांधी के फेस पे जुड़ेंगे। राहुल गांधी का फेस हर पोस्टर में तो इलेक्शन के टाइम पे होने वाला है। बस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुझे एक बहुत बड़ी कमी फिगर आउट हुई कि आपका टेलीप्रॉम्प्टर क्यों नहीं? छोटी सी पर्ची लेके बैठ जाते हैं, आपके कहीं से तो पढ़ के बोलो, बाकी पढ़ के बोलो, टेलीप्रॉम्प्टर से आते हैं। मोदी जी उनकी कहानी थोड़ी सुन लेते हैं। फ्रांस के अंदर G7 समिट हो रहा है, मोदी जी वहां पे गए और मेलोनी से मिलकर कह रहे हैं कि देखा हम सोशल मीडिया पे कितने वायरल हो रखे हैं। मुझे लगा था ऐसे इवेंट्स के अंदर जाके मोदी जी धंधे की बात करके आते हैं।
अगर तुमने मेनस्ट्रीम मीडिया से G7 के बारे में कुछ भी सुना तो ये फोटो जरूर देखिए। ये फोटो लगा के इंडियन मीडिया कह रही है भैया हमने ट्रम्प को पेल दिया, हमें चाटे मारे, बुद्धि ऐसे बुद्धि बात करके ना सोच के भागा। अगर रियलिटी के अंदर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी सॉलिड स्टैंड नहीं है, पर काफी हद तक नहीं है। पूरा मैटर क्या सबसे वो समझो G7 समिट 10 साल अभी पीछे क्या हुआ था, अमेरिका ने शिप के ऊपर अटैक कर दिया था जिसके अंदर 3 इंडियन लोग मारे गए और देश की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था कि भैया एटलीस्ट ट्रम्प के सामने बात तो करो कि क्या बीटी है। जो 3 लोग मारे गए उनको 10 लाख का मुआवजा देके छोड़ दिया, ऐसे समझ रहे कि 10 लाख तो बहुत ज्यादा, इनकी कुश्ती भी खा लेंगे। तो देश के अंदर कोई समझदार आदमी चाह रहा था कि भैया अगर आप वहां पे जा रहे हो तो उसको कन्फ्रंट करो कि क्या बीटी, दूसरा यूएन के अंदर आवाज उठाओ और उनको जस्टिस दिलवाओ। बस यूएन के अंदर आवाज नहीं उठाई गई, पर G7 समिट के अंदर बात जरूर करी गई। मैं भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मोदी जी ने डायरेक्टली बोला कि हमको सेफ्टी को इंश्योर करना होगा, जो भी वहां पे शिप्स घूम रही होती है उनकी। डायरेक्टली मोदी जी ने कुछ भी नहीं बोला वहां पे, पर एक बहुत सही चीज इंडिया से दूरदर्शन का एक रिपोर्टर क्या होता है, जब मोदी जी और ट्रम्प सामने बैठे थे तो उसने एक क्वेश्चन पूछा। उसने पूछा कि भाई जो 3 लोग मारे गए इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? ट्रम्प का वही बिजनेसमैन आदमी है, चीनी की बातें कर रहा था, उसका मोदी मक्खा लगा रहा था, बोला बहुत स्ट्रांग नेगोशिएटर है, फालतू चीजें। लोगों ने क्लिप देखी, नसा काट ली, हमारे मोदी जी ने प्रेम के अंदर क्या किया हमारे लिए, सीधे मुंह बात भी नहीं करी। ईरान जैसा देश यूएस से सरिया ले लेता है और हम लोग लड़ना झगड़ना बहुत दूर की बात है। हमारा नेता सामने बैठा, प्राइम मिनिस्टर सामने बैठा, बात नहीं करता, इनडायरेक्टली बातों घुमा के बोला जा रहा है कि हमको सेफ्टी को इंश्योर करना चाहिए। अरे मुंह पे बोलो, हगाया तुमने, नहीं लोग मारे हमारे देश के, तुम्हें क्या हक बनता है इस चीज का? और ये भी जो बोला ना छोटी सी पर्ची से पढ़ के बोल रहे थे, शायद वहां पे टेलीप्रॉम्प्टर अलाउ नहीं होगा, छोटी सी पर्ची जेब में ले रखी है, नीचे करके देख पड़ रहे हैं। हमको तो चीज का पता भी ना लगे कि भैया पर्ची से टेलीप्रॉम्प्टर से दिखा जा रहा है। जब भी ऐसे इवेंट्स होते हैं ऐसी फोटोस को निकाल लिया जाता है या फिर इन एंगल्स को दिखाया जाता है। जब भी क्लिप्स इंटरनेशनल मीडिया से बाहर आती है तो पता चलता है 2 टेलीप्रॉम्प्टर लगा रखे हैं सामने, इधर देखेंगे तो इधर दिख जाएगा, उधर देखेंगे तो उधर दिख जाएगा। और मीडिया ही है जिससे हमको कुछ क्रेजी शब्द सुनने में मिल जाते हैं। वहां पे मेलोनी से मिल रहा है जो कहते हैं देखो सोशल मीडिया में हमको कितने वायरल हो रहा है, हम तो कपल बने पड़े हैं। इन हरकतों की वजह से ये वाले जब भी मोदी टीम डालते हैं हमेशा म्यूट कर देते हैं। उनको पता होता है यार मैंने मुंह खोला तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। बाहर के देश रैली ना हो जाए, इंडिया के अंदर पीआर कैंपेन शुरू हो जाता है, पूरा मीडिया एम्पायर चीज दिखाने पे लग जाता है कि हमारा नेता कितना स्ट्रांग है। रियलिटी के अंदर जो लोग मारे गए हैं यूएस मिलिट्री की वजह से उसको 10-10 लाख रुपए देके साइड में फेंक रहे हैं। उसके परिवार का आदमी गया तो उसको तो वापस ला नहीं सकते, ब्लेड अंदर गया उसी को ही थोड़ा सा कंपनसेट कर दो। 10 लाख में आज के डेट में क्या आता है मुझे सबसे बड़ा ये फोन 1.5 लाख के अपने 10 लाख दे दूं, समझ पा रहे हो 10 लाख में क्या होगा? एक आदमी जो अपने परिवार को कमा के सारी जिंदगी खिलाने वाला था वो 10 लाख में क्या कर लेंगे यार? हर चीज का तमाशा बना रखा है, मजाक बना के छोड़ देते हैं, हर चीज को पीआर कैंपेन में उछाल देते हैं। मुझे बता आज हम थोड़े से लेट हो गए तो फटाफट चलते हैं अपने प्राइम टाइम स्पोर्ट के अंदर। प्राइम टाइम स्पोर्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले राम मंदिर के डोनेशन बॉक्स से 200 करोड़ के स्कैम के बारे में। इस न्यूज़ की सबसे सुंदर बात पता है कि आधे लोग ना न्यूज़ सुनने से पहले बोलेंगे अरे मुस्लिम के खिलाफ बोल के दिखा, अरे उस धर्म पे बोल, अरे उस धर्म, अरे इस पे बोलने यार मैं मेरे धर्म की कमी गिनवा के उसको सही करना चाहता हूं, मैं क्यों किसी के धर्म के बारे में बोलूं? तुझे सुनना तो सुनने नहीं, तो स्क्रीन खुली हुई है ना, उसमें बार-बार क्लिक करता है, वीडियो आगे हो जाएगी। पूरी कहानी है कि राम मंदिर का जो डोनेशन बॉक्स था उसके अंदर 200 करोड़ के स्कैम की बातें सामने निकल के आ रही है। सबसे पहले पूरी कहानी समझो होता है कि लोकल न्यूज़पेपर के अंदर ना राम मंदिर से जुड़े लोगों की ना लेविश लाइफस्टाइल के ऊपर आर्टिकल आ जाता है। बट मामला सीरियस पता है जब अखिलेश यादव 7 जून को इस पर ट्वीट कर देता है और मामले में विसल ब्लोअर है ट्रस्ट के चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर, इनका नाम है महिपाल सिंह और उनका बोलना है कि 2020-21 से ही ये चोरी चल रही है। और जब इन्होंने डिस्क्रिपेंसी की न्यूज़ ट्रस्ट को दी थी तो इन्हीं को ही निकाल दिया गया। मतलब इनके साथ वही काम होता है कि तुम पुलिस को कंप्लेंट लिखवाने गए, पुलिस कह रही है तुझे पता है तू बैठा था जेल में। मतलब एग्जांपल से बताऊं तुम लोग पुलिस के पास कंप्लेंट लिखवाने जाते हो, पुलिस आगे से कहती है अच्छा तुझे स्कैम पता चल गया हम भी मिलेंगे। मतलब अगर एग्जांपल से बताऊं कि क्या हुआ था तो तुम लोग पुलिस के पास ना कंप्लेंट लिखवाने जाते हो कि फलाने घर के अंदर चोरी हुई है, पुलिस तुम्हें आगे से बोलती है अरे तुझे कैसे पता चला चोरी हो रही है, हम खुद करवा रहे हैं, चलो तू अंदर बैठ, तुझे जेल होगी, तुझे पता चल गया सारी चीजें। कानून तो वैसे ही अंदर तुझे देखने के लिए आने नहीं वाला, जुडिशियरी बाद में देखेंगे तू जेल में बैठ। इन्होंने ये भी बताया कि मंदिर परिषद के अंदर 8 महीने का सीसीटीवी गायब है। अब स्कैम कैसे हुआ है, किसने केस पर जाने से पहले डोनेशन की काउंटिंग समझ कैसे होती है, जितने भी दान पात्र लगे होते हैं उनको बहुत ही कॉन्फिडेंशियल जगह पे लेके जाया जाता है और दान पात्र को ऑलमोस्ट 50 लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं, जिसके अंदर से 24 लोग काउंटर्स होते हैं तो सिर्फ उसमें बैठ के कैश को सीधा कर रहे होते हैं और गिन रहे होते हैं। 12 ट्रस्ट के लोग होते हैं जो पूरी चीजों को सुपरवाइज कर रहे होते हैं, 14 उसके अंदर से एसबीआई के लोग भी होते हैं जो पूरी कैश को ऑडिट कर रहे होते हैं। अभी मामला खराब पता है क्या हुआ, जो काउंटर होता है ना उसकी सैलरी होती है 15 से 20 हजार, कुछ काउंटर्स के पास आईफोन, प्रॉपर्टीज, होटल, ये सारी चीजें निकली। उनमें से काउंटर तो कुछ साल पहले ऑटो चलाता था, कितने चला लिया, दान पे छोड़ा किसी को। काउंटर्स ने अपना 70 उनका खुद का हॉस्टल बनवा लिया। अगर तुम प्रैक्टिकली देखो बिजनेस प्लान उनका एक नंबर है। सबसे पहले कोई अयोध्या आएगा हॉस्टल में रहेगा, हम उससे पैसा चार्ज करेंगे, मंदिर में जाएगा डोनेट करेगा उसमें से पैसा चार्ज करेंगे। और धर्म तो धंधा हमारे देश के अंदर पहले दिन से चल रहा है। मुझे पता है इसके बाद तेरा क्या ओपिनियन है, फिर एक धर्म को टारगेट कर रहा है दूसरे को, अरे दान पात्र धर्म नहीं है, वो आदमी जो चोरी कर रहा है वो धर्म नहीं है। अपने छोटे से नटशेल से बाहर निकल, धर्म बहुत बड़ा है। अभी तो सारी कन्वर्सेशन हम लोग कर रहे हैं, ये एलिगेशन है और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाने की बात की जा रही है। और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद हो सकता है कि 200 करोड़ का नंबर 2 करोड़ का निकला है, हो सकता है निकले कि भैया स्कैम हुआ ही नहीं है, हो सकता है ये भी निकला कि भैया बहुत क्रेजी स्कैम हुआ है। 200 करोड़ का नंबर नहीं था 2000 करोड़ का नंबर, कुछ भी आ सकता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके अंदर ये है कि तुम लोग जहां भी पैसा डालते हो टोटली तुम्हारी चॉइस। नहीं बोल सकते तुम मंदिर में पैसा डोनेट ना करो, तुम लोग किसी गरीब को मत दो, तुम्हारा पैसा तुम लोग एक काम करो, सारे पैसे को इकट्ठा करो, लगा दो, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि तुम लोग ना कॉन्शियस को लिया करो अपने पैसे, तुम लोग ना मेक श्योर किया करो कि तुम लोग जिस काम के लिए पैसा दे रहे हो ना वो काम हो रहा है तुम्हारे पैसे। फॉर एग्जांपल तुमने मंदिर के अंदर बोल दिया यार ये लो 10,000 पकड़ो, लंगर करवा देना, अगले दिन जाके देखो ना लंगर चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो तुम्हारे 10,000 रुपए जो पैसा कमाने के लिए इतना एफर्ट लेते हो, अगर कभी दान कर रहे हो, कहीं पे डोनेट कर रहे हो, बिल्डिंग बनाने के लिए एफर्ट कर रहे हो तो उसके अंदर भी ध्यान दो। अगर तुम लोग चाहते हो यार 1000 मंदिर होने चाहिए, हम जितना मर्जी पैसा डोनेट करें, तुझे क्या, मुझे कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी से डोनेट कर। मंदिर बनाने के लिए 10,000 डोनेट करने 15 का सीमेंट के कट्टे लेके दे, सीमेंट के कट्टे पड़े ईंटें ले दे, ईंटें पड़ी बजरी ले दे, बजरी पड़ी मिस्त्री ले दे, मिस्त्री को बोल के भैया ये दीवार चढ़नी है कल के अंदर जितने पैसे पैसे लेके जाइए। अपना पैसा जहां लगा रहे हो ना वहां पे उसकी ओनरशिप देना शुरू करो, नहीं तो पैसा मिसयूज होगा। हमारे नजर में जो तुम पुण्य के लिए पैसा दे रहे हो पैसा अगर पुण्य तक पहुंच नहीं पा रहा तो तुम्हारा पैसा बर्बाद हो रहा है ना। बाकी पैसा वेस्ट होने से ज्यादा है तुम्हारा पैसा किसी के लिए धंधा बनता जा रहा है। और यहीं से हम लोग चलते बिजनेस एंड एआई की कंबाइंड न्यूज़ के ऊपर। अभी कंबाइंड न्यूज़ इसलिए कि मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूं। मेरा एजेंडा कभी ये नहीं होता कि तुम्हें अप टू डेट रखना है, मेरा एजेंडा हमेशा ये होता है कि तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा दो। तो जिन भी न्यूज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले उसके अंदर एआई की लॉजिक्स और बिजनेस की बातें, तो दोनों कंबाइन करके चेक करके देखते हैं कि तुम लोगों को कैसे समझ आ रही है। सबसे पहले न्यूज़ है ग्रो की तरफ से, ग्रो एक्सआई कुछ भी बोल सकते हो, दोनों की कंपनी एक्सआई कंपनी है और ग्रो उनका प्रोडक्ट है जो ऐप यूज कर रहे हैं, दैट इज ग्रो। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कर्सर को बाय कर लिया। जिनको कर्सर नहीं पता, एक वेबसाइट या ऐप बनाने के लिए टूल था। मोस्टली कर्सर क्या करता था, चैटजीपीटी हो गया, क्लाउड हो गया, ओपनएआई हो गया, ग्रो हो गया, सबकी एपीआईज लेता था, अपने टूल के अंदर मर्ज करता था। जब भी आप उसके पास जाके बोलते थे कि मैं एक्सवाईजेड टाइप की ऐप बनानी, मुझे ऐप बना के दे दे, तो आपके जो भी प्रॉम्प्ट्स होते थे उसको रिफाइन करके एपीआईज को देता था और एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर आउटपुट निकालता था। अभी ग्रो ने उसको खरीदा, उसके पीछे माइंडसेट समझो। अभी क्या होगा ना, जितने भी एआई मॉडल सारे ना हर कोई अपनी एक यूएसपी के ऊपर ऑपरेट करेगा। अभी तुम लोग अगर गूगल को देखोगे ना, गूगल इमेजेस के अंदर अच्छा काम कर रहा था एक टाइम पे, अभी वो लोग बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे। बट अगर तुम गूगल का मीट यूज करते हो, वर्कस्पेस यूज करते हो, जीमेल यूज करते हो, उसके अंदर बहुत ही एफिशिएंटली इंटीग्रेट हो गया। अभी जहां पे गूगल काम कर रहे हैं ना, गूगल लाइटर मॉडल्स के ऊपर काम कर रहा है। जैसे उन्होंने एप्पल के साथ पार्टनरशिप करी जिसके अंदर उन्होंने गैमा मॉडल डाल दिया अपना, अभी ऐसे मॉडल्स के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके अंदर आपको जीपीयू की नीड ही ना पड़े, छोटे मॉडल्स बनाए जाए, बहुत ज्यादा एफिशिएंट मॉडल्स बनाए जाए और उसको अपनी यूएसपी बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर मर्ज हो जाए। चैटजीपीटी क्या कर रहा है, चैटजीपीटी आपका गूगल सर्च बनना
जाता है। ChatGPT के पास 900 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, समझ रहे हो? 900 मिलियन लोगों के प्लेटफॉर्म को हर महीने यूज कर रहे हैं और उनकी यूएसपी क्या, वो अच्छी फोटोज जनरेट कर देते हैं और आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर हर सवाल का जवाब देना चाहते हैं। सिमेंट्रो भी कर रहा है, उसने भी अपनी यूएसपी फाइंड कर लिया, वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट्स के लिए काम कर रहा है। और जिन लोगों को लगता है क्लाउड तो बहुत बड़ा हो गया, तभी उनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा, नंबर कंपेयर करो। ChatGPT के 900 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स और वहीं पे क्लाउड के पता कितने, सिर्फ 20 मिलियन। फिर भी ChatGPT का ARR पता कितना, सिर्फ और सिर्फ 28 बिलियन और वहीं पे क्लाउड का ARR है 47 बिलियन। जिसको ARR नहीं पता, एवरेज रेवेन्यू रन रेट, जिस भी रेवेन्यू नंबर पर आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो साल तक कितना हो जाएगा। ChatGPT के पास 900 मिलियन लोग हैं, फिर भी सिर्फ 28 बिलियन का रेवेन्यू है। क्लाउड के पास सिर्फ 20 मिलियन लोग हैं, फिर भी 47 बिलियन का रेवेन्यू है। क्यों है? क्लाउड सब कर रहा है कॉर्पोरेट्स को, ChatGPT सब कर रहा है आम आदमी को। आम आदमी की स्पेंडिंग पावर हमेशा कम होगी, कि मोस्टली यूजर फ्री है, क्लाउड के मोस्टली यूजर पेड है। ऐसे जब ब्रो बनाया गया था ना, ब्रो की यूएसपी कहती है बहुत ज्यादा ब्लंट है, आपको बिकनी के अंदर डाल देगा, आपकी फोटो को मूव कर देगा, आप पॉलिटिकल कन्वर्सेशन कर लो, उसके ऊपर मजाक उड़ा देगा। तो पहले इन्होंने अपनी यूएसपी के साथ अपने बॉडी को लॉन्च कर दिया कि भैया हम लोग अलग हैं, हम लोग बेटर। बट क्या हो रहा है, उस बेटरमेंट से इनको पैसा नहीं मिल रहा, क्योंकि उस बेटरमेंट के लिए लोग ज्यादा पे करने के लिए रेडी नहीं है। आज अगर ब्रो का प्रीमियम प्लान देखो सिर्फ 700 रुपए का, वहीं पे ChatGPT वाले 2000 ले रहे हैं, जेमिनी वाले 2000 ले रहे हैं, क्लाउड का तो 2000 वाला किसी काम का नहीं, 10000 वाला लेके बैठा हूं मैं। पर ग्रुप ज्यादा चार्ज कर नहीं पा रहा क्योंकि ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहा है। तो इन्होंने बहुत सिंपल स्टेप समझा कि भाई कोडिंग तो आज के डेट में सारी ऐप्स कर रही हैं, ChatGPT भी कर रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं, क्लाउड भी कर रहा है, पर लोग किससे करवाएंगे, जिससे करवाना इजी होगा। फॉर एग्जांपल आज से 2 साल पहले मैं कोई भी पूरी स्ट्रक्चर ऐप बनवाना चाहता था, किसी भी एआई मॉडल से 2 दिन लगते थे, उसको समझाओ, फिर फोटोज खींच
खींच के बोलो, गोले मार के बताओ कि भाई ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, फिर वो तो सही करता था, बहुत टाइम लगता था। और आज के डेट में मैं ज़ोमैटो टाइप बनाता हूँ तो शायद मैं 4 से 5 घंटे के अंदर बना दूंगा। अभी फाइट एक्चुअली ये नहीं है कि कौन ज़्यादा अच्छा बना रहा है, फाइट एक्चुअली ये कि कौन ज़्यादा जल्दी बना पा रहा है। एंड जल्दी का मतलब मैं ये नहीं बात कर रहा कि आप कितने जीपीयू यूज कर रहे हो, कितना एफिशिएंटली वर्क कर रहे हो। पास का मतलब ये कि आप लोग मेरे प्रॉम्प्ट को समझ के कितनी जल्दी आउटपुट दे पा रहे हो। 2 साल पहले अगर मेरे को ऐप बनवानी थी, मुझे उसको ऐप समझानी पड़ती थी, मुझे उसको लेआउट देने पड़ते, स्ट्रक्चर देने पड़ते, फॉर्मूला देना पड़ता, समझाना पड़ता, यहाँ क्लिक कर तो यहाँ जाना चाहिए, यहाँ क्लिक कर तो यहाँ जाना चाहिए। आज के डेट में क्या करना है भाई, ज़ोमैटो की ऐप है, कॉपी कर दे। अभी सेम चीज क्लोड को बोली, सेम चीज ग्रोक को बोली, सेम चीज जेमिनी को बोली, तो कौन जल्दी बना के देगा, कौन मेरे से कम सवाल करेगा, वो है गेम चेंजिंग मोमेंट। तो ग्रोक ने क्या किया, खुद की यूएसपी बनाने के लिए कर्सर को परचेज कर लिया, उसका एजेंडा समझ। कर्सर का भी काम ही है, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि वो मल्टीपल मॉडल्स को यूज करके कोडिंग करवाता है। तो सिर्फ एक ही डेटा है, कैसे क्वेश्चन के बाद कैसे आउटपुट से आदमी ज्यादा सेटिस्फाइड फील करता है। तो एक प्रोडक्ट आ रहा है जिसका नाम है ग्रोक बिल्ड, जिसका एजेंडा क्या है कि आप लोग ऐप बनवा सको और इनके आउटपुट ज्यादा एफिशिएंट निकल सके। इसके लिए इन्होंने पूरी कंपनी को ही परचेज कर लिया। अगर तुम लोग कोई भी आर्टिकल देखोगे तो बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन होने वाली है कि यार स्पेसएक्स ने क्यों एक्वायर की। मैं बात कर रहा हूं ग्रोक की, एक्सएआई की, स्पेसएक्स ने इस कंपनी को एक्वायर करके क्या करना है। स्पेसएक्स एक अलग कंपनी है, ग्रोक की और एक्सएआई अलग कंपनी है, तो इसके ऊपर थोड़ा डीप डाइव चलती है। स्पेसएक्स ने एक्सएआई को खरीद लिया, मतलब अभी ग्रोक भी स्पेसएक्स का ही है। उसके पीछे का एजेंडा बहुत क्रेजी है, मैं समझाता हूं। आज की डेट में जितने भी एआई मॉडल्स हैं, सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम है जीपीयूस। भाई बहुत हैवी जीपीयूस है, बहुत महंगे मिलते हैं। सेकंड है कि भैया बिजली बहुत खाते हैं, पानी बहुत खाते हैं, क्योंकि जब जीपीयू चल रहे होते हैं उनको बिजली चाहिए, जब जीपीयू चल रहे होते हैं उनको ठंडक चाहिए। तो कुछ कंपनी क्या कर रही है, पूरी जीपीयू को पानी के नीचे फेंक दे रही है, समंदर में डाल दे रही है, भैया इसी पानी से ठंडे होते रहो। बट स्पेसएक्स क्या कर रहा है, एक कदम आगे चल रहा है। उनका ये बोलना है कि हम लोग एक काम करते हैं, सैटेलाइट के थ्रू स्पेस में छोड़ देते हैं, स्पेस में तो वैसे ठंडी रहती है, जीपीयू ठंडे भी रहेंगे। क्योंकि जो हमारी सैटेलाइट से वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाएंगी तो 24 घंटे सूरज की रोशनी भी पड़ेगी, जिससे बस वन टाइम सैटेलाइट और जीपीयू की इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके बाद उसको स्पेस में भेज देना, सूरज से एनर्जी खींचेंगे, उससे बिजली बना लेंगे। स्पेस में वैसे ठंडी रहती है तो जीपीयू ठंडे भी हो जाएंगे और सैटेलाइट कनेक्टिविटी से उसको से कनेक्ट भी कर देंगे, जिससे इन फ्यूचर क्या होगा, एक बार तो ये बहुत महंगा पड़ेगा, बट आने वाले टाइम में एआई को काफी ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट कर देगा। बाकी जो एआई और बिजनेस में मर्ज करके एक्सप्लेन किया, मुझे बताने तुम्हें कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड वीडियोस फ्रीक्वेंटली नहीं आ रही और एक स्ट्रेटेजिक मूव है क्योंकि हमारे व्यूज थोड़े डाउन हो चुके हैं। मैंने वीडियो में जैसे बात करी थी उसमें मुझे सजेशंस दिए कि एक बार वीडियोस का अपलोड करके देख, और मैंने तुमसे भी पूछा था तुम्हें डिटेल वीडियो चाहिए या डेली वीडियो चाहिए, तुम्हारा भी ये बोला था कि डिटेल लेके आओ, टाइम ले। तो हम ट्राई करेंगे कि वीडियो की लेंथ उसको 30 से 35 मिनट तक पुश कर दे अगले हफ्ते के अंदर, और शायद हफ्ते के अंदर 3 या 4 वीडियो की कोई फ्रीक्वेंसी के ऊपर लो हो जाए। बाकी जैसा भी होगा तुम लोग अपने सजेशंस दे सकते हो। सब्सक्राइब करना चालू कर दो क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 5 लाख हिट कर ली। हाइपर बटन ऑलरेडी माइंड से गायब हो चुका होगा, तो फिर सब्सक्राइब ना करके तुम लोग क्या बचा रहे हो। दबाओ बटन, पिछली न्यूज़ काफी लोगों ने मिस कर दिया, एल्गोरिथम पुश नहीं करा जाके, देख सकते हो यहाँ पे लिंक आ रहा होगा। मैं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वेल कैसे हो भाई लोग, क्या हालचाल। 2 घंटे पहले रॉकस्टार का एक ट्वीट आया है जिसमें प्री ऑर्डर्स फॉर GTA 6 विल बी ऑफिशियली बिगिन ऑन 25th जून ऑन डिजिटल स्टोर फ्रंट्स एंड ऑल अदर सिलेक्ट रिटेलर्स। ओके वेल, ये कुछ वीडियो आई है, ये कुछ वीडियो ये वाली है जो हम अभी प्ले करेंगे। मैं तुमको सुना रहा हूं, वैसे इसमें कुछ ऑडियो नहीं है, ठीक है भाई, ऑडियो है भाई, मैंने इस वीडियो में सुना था। वेल, इसका जो कवर है वो रिलीज हो चुका है एंड आई एम फकिंग एक्साइटेड। ओ भाई, यू वी गॉट इट, ये होने वाला है उसका कवर। एंड आई गेस यूट्यूब पे मैं रहूंगा जिसने हिंदी में बनाया ये चीज, बट यस इट इज व्हाट इट इज। कितना सही लग रहा है ये चीज। प्री ऑर्डर स्टार्ट जून 25 जो अभी आज 18 तारीख है, तुम लोग का वीडियो दिख रही है। एंड वीडियो को डालूंगा, वीडियो को वीडियो डालूंगा इसका कैसे क्या है, इसका कहानी। इसके अलावा जीपे का जो ऑफिशियल आपने देखा है, ऑफिशियल जो उनका जो वेब पेज है, इतना एक्साइटेड होंगे बोलने भी, वेब पेज जो है वहां पर क्रिएशन के डेट लिख करेंगे। प्री ऑर्डर ऑन जून 25, ठीक है। PS5 एंड Xbox सीरीज के इस पे मिल जाएगा तुम लोग को। ये कुछ ऐसा दिखने वाला है तुम्हारा पेज, ठीक है। अब तुम स्क्रॉल करोगे तुमको ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है, ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये चीज। जितने भी सारे के लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक आउट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जब भी वाई सिटी यूएसए वाला बताया है, जैसे लूसिया है ओनली नॉन ब्ला ब्ला ब्ला, ये पूरी कहानी है, आप जाकर पढ़ सकते हो। ट्रेलर 2 यहां पर है एंड मेरे अंदर से ट्रेलर 3 आने वाला है, ठीक है, वहां पर। एंड मीडिया नेटवर्क भी है, बहुत सारे फोटोज भी आ चुके हैं इसके बारे में। ये वही ऑफिशियल ट्रेलर है तो यहाँ पर है जो बिगन इसके बारे में। अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम लोग को जाननी है, जो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसके और वेबसाइट के बारे में भी और इन्फॉर्मेशन, मतलब उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। कितने का आएगा GTA 6, सब पे डाउट आ रहा है, ठीक है। मुझे जितना इन्फॉर्मेशन मिली है उस हिसाब से भाई GTA 6 जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। एक आता है तुम्हारा बेसिक एडिशन जो ऑनलाइन एडिशन है, डिस्क एडिशन है वो, और एक आता है तुम्हारा प्रीमियम एडिशन, डीलक्स एडिशन, और एक आता है तुम्हारा मेन जो आता है कलेक्टर एडिशन, ठीक है। तीनों का प्राइस अलग अलग है। फिलहाल देखो जो मेन प्राइस है जो 19 को लॉन्च होगा, अभी जो चालू होने वाला है प्री ऑर्डर्स, उसमें मिनिमम 79 से लेके 60 से लेके 79 तक डॉलर्स तक हो सकता है, ये चांसेस है, ठीक है। एंड इसका जो इसका अपना प्रीमियम वाला एडिशन आता है वो आने वाला है तुमको $100 से लेके कुछ $115 तक कुछ है, ठीक है। उसका मैंने ऐसा $115 तक है, कुछ $90 से $115 तक कुछ है, ठीक है। उसके अलावा जो मेन एडिशन है, जो कलेक्टर एडिशन है, वो 150 से लेके $200 तक आएगा। तो इंडायरेक्टली यहाँ पर वही एक बेस प्राइस बताया कि $80 से लेके $100 तक बेस प्राइस है, बट इसके अलावा जो दो एडिशन आने वाले हैं उनका $200 तक चले जाएगा वो चीज, ठीक है। फिलहाल कभी प्री रजिस्ट्रेशन चालू नहीं हुआ, प्री ऑर्डर या प्री रजिस्ट्रेशन जो भी यार, प्री ऑर्डर जो है वो चालू होने वाला है 25 से 22 दिसंबर टुडेस वीडियो। और कुछ अपडेट अगर मैं बताऊंगा, मैं ओवर एग्जैजरेट कर रहा हूं, भाई मैं पागल हो गया भाई। 2 घंटे से मैं 2 घंटे बाहर था, 2 घंटे से मैं ट्राई कर रहा हूं कि वीडियो बना के अपलोड करूं, वीडियो बना के अपलोड करूं। अभी जस्ट आया घर पे, मैं अभी वीडियो बना के तुम लोग के यहां पर सामने लेके आया हूं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कंटेंट आते रहेंगे GTA 6 एंड स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।
तो क्या होगा सर? आता हे जे आता टुर्नामेंट चालू आहे टुर्नामेंट चालू वन डे दोन सेम आहेत दोन देश काय काय मी इंडियाचा टीम E1 हे इंडिया आता हे पण अफगाणिस्तानाबरोबर आहे ना चालू मेनची श्रीलंकेबरोबर त्यांचे इंडियाची फक्त अफगाणिस्तान बरोबर आहे. दोन देश आहेत ती नाही याची त्रिकूट एची त्रिकूट चालू आहे. आणि याची पण दोन देश आहेत आता तर इंडिया मेनची आता ही पण चालू होईल ना. किती भेटतात रे मानधन हम्म एक दौरा पर मॅच असतं ना, प्रत्येक मॅच वर असते. टेस्ट आलं काय वन डे झालं काय टेस्ट झालं काय अच्छा असं असतं आणि पर मॅच असतं त्यांचं, दिवसाचं नसतं. नाही पर मॅच पर डे ना मॅच पर मॅच पूर्ण टुर्नामेंट पूर्ण टुर्नामेंट नाही ना काय पूर्ण मॅच आहे ना. आता किती मॅच मध्ये तुमचं सिलेक्शन झालं त्यावर आहे आणि कॉन्ट्रॅक्ट वेगळा असतो. म्हणजे वर्षाला काहीतरी ठराविक अमाऊंट भेटतेच, खेळा नका खेळू. Need to try something different. Ofer to start the half. And as we've seen, Greg, navigating this age of social media can be difficult for an NBA player. Yeah, a momentary indiscretion can get broadcast to the whole world. So there's a need for caution that's probably higher than in decades past. And for a young player like MP, it's all about establishing good habits. Get yourself into a routine. Those will help you have a long career. He's just such a well-rounded offensive player. He's got a little bit of everything. Here's MP. Pops in the layup for two. MP's got 48. Yeah, they're going to have a nice little run here. Lakers have gone only 1 of 5 from the field since halftime. Very slow start offensively. Randolph against. काय नाही, किती कमवतात ते क्रिकेट खेळतात ते, किती कमवतात असं.
जो चांगला खेळ त्याला चांगली कशी मिळत का सर्वांनाच तेवढे येतं सर्वांसारखे नको आवडले जेवते मिस्त्री करतो MP and stolen by MP. Inside. Hits it again. Wow. My goodness. 50 for the game. Yep, he is putting on a show. LA has gotten blank from three-point land so far in the third. Still 0 for 3. Stolen by Avdia. Here's MP. He got it again. Sensational. And he's up to 52 points. Yeah, making a GA look all too पप्पाला स्टेशनला सोडून easy right now. And here is Doncic. 13 points in the game. Outside, Dort. Pass to Doncic. 2 minutes remaining in the third. Plays it up and makes it परवाना शनिवारी पप्पाला पहिली न्यूज in. Doncic has got 15 points. And he's really shot the ball well, but it hasn't been contagious. MP up top. Now Klingon. Jokic defending. And a wide open. म्हणजे काय बोलतेस परत सानिका आजारी होती तर मी मेलने बघ गेली 7:30ची मेल होती बरोबर मग पहिला पप्पांना घेऊन सोडलीस बाहेर काय नाही पापा एकटेच गेले मी नव्हतो गेलो त्यांच्या बरोबर आपण गेलो होतो मी घरीच होतो तुला फक्त सोडायला आलेलो नाही पप्पांना सोडून आणलास आणि मग नंतर भाजी घेतली आणि पप्पांनी परत आपण तिघ जण नाही काय ट्रेननी गेलो नाही काय काय तुला मी कल्याणलाच तर सोडली ठाण्याला कुठे गेलो आपण मग हा मग ठाण्याला नाही गेलो होतो मेलच्या वेळेस मग तेव्हा आपण तिघं पण गेलो होतो कल्याणवर तेव्हा पप्पा पायकळ्यावरून भाजी घेतली आणि इथून नाही घेतली तेव्हा मी जायचो ना दररोज नाही जायचं हो मग आता भायकडे का नाही सोबत जातो ना आता काय ठीक आहे वजन का घ्यायला Look for MP. Gets it to go from beyond the arc. MP's got 55. What a performance for him on the offensive end. He's been fantastic the entire game. He muscles it in through the contact, and they call the foul. He's on his way to the free throw line. Man, he's having quite the quarter, converting at a really high percentage. Los Angeles shooting their first free throw of the night. The all-around game of Doncic is impressive. A walking triple-double threat every night. Grant the pass to MP. Doncic with the block. And it's Jokic in the corner from the baseline. And good. Got the friendly bounce off the right side of the rim. Jokic has got his third basket of the night right there. Portland's gone 2 of 2 from long range in the third quarter so far. And he uses the glass on the layup. They are just killing him on the interior. Lakers have gone an even 50% from the floor here in the third quarter. 4 of 8. Williams kicks to Doncic. Jokic, that's a two-pointer. And it's Portland with the rebound. The edge on the glass is the difference. It's allowed them to build this lead. That is a strong finish by MP, showing he can handle the physicality of the NBA. Doncic against MP. The tray. And it's Doncic missing. Well, he was able to sink a triple back in the first half, but he has yet to connect here after the break. Beautiful transition offense there. That's execution at its best. And it results in the highest percentage look you're going to get. And here's Doncic from the arc. No basket for the 7th time in 15 attempts this game. MP finds Grant. Here's Harris. Back to MP. It's stolen.
So it's Portland out there all by themselves with a 32-point lead to end the quarter. And while we can now, let's take a look at today's State Farm assist of the game. And he sliced the D wide open with this feed. They had no chance to prevent that basket. Well, I like the fact he didn't telegraph. Comes in for Portland. MP comes in for Davis. And then for the Lakers, Jokic comes in for Jackson Hayes. And James subbed in for Scottie Pippen. So the Lakers 5 right now. Jordan Poole is out there with Williams. Then it's James. And it's Nikola Jokic. And it's Doncic in at the point guard position. He's so skilled on the interior. Jokic plays with so much force and leverage down low. Here's MP. And good! He hits it again. Hit that 61 point. Yep, everything is going his way right now. The three for Doncic. It's hauled in by Harris. They've shown some strength in the paint today. Their work on the boards has been impressive. And MP is letting his play do the talking. He is on one. Doncic against MP. There's the triple. And it's Doncic missing. Oh, he is off from deep. Maybe it's time to look for another option. Well, they did a great job putting a body on him, and they didn't allow him to convert. Took him no time at all on that one. The three-point stroke from Jokic, it just looks confident. Portland's gone 1 of 2 from three-point range here in the fourth. MP kicks to Grant. 2 minutes. MP outside. 2 minutes. 6 to shoot. Rebound the Lakers. Doncic with it. Now defended by Grant. Doncic bounce pass. Jokic inside. Working on Walker. Jokic inside. Guarded by Walker. Basket counts. Jokic has got 7 now in this quarter. Well, guys, this was never really a contest, just a total obliteration, if you will. And you can safely say mission accomplished now for the Trailblazers. As one-sided as it gets today, you know, there were some dominant moments in about every facet of this game for that team. Yeah, I mean, Kevin, it's hard to think of what didn't go right for them. Game planning by the coaches, execution by the players, everything was just on target. And on the year, this will turn out to be win number 34 for them. And they've taken control of the season series. This brings them to 2-0 with 1 game left against this squad. And one of the key components to this victory, if not the biggest, was the incredible performance for MP. And no doubt, he was the most impactful player for their offense tonight. And the foul called on MP. Personal foul. That's foul number 2 for him. Substitution on the court. 54 seconds left here in the fourth quarter. Drills the three-pointer. Big make for Dort. That is his bread and butter. Nails the 3 from the corner. MP passes to Harris. MP kicks to Holiday. And here's MP for 3. Yes, and it's Holiday with the assist that time. Saw the opportunity to put this away, and you could see the killer instinct take over. They are playing with so much confidence. They've been clutch all the way around. This arena was rocking throughout the night. You could really feel the energy. What a great performance. They have given the fans their money's worth. This fires on the corner 3. On the wing, MP. Guarded by Doncic. Doncic against MP. Back to Holiday. Great communication on the alley-oop. Oh, just a picture-perfect alley-oop. You gotta love that. A little surprised, Greg. He didn't go for the big slam, but it works just the same.
And so Portland takes this one, but by a big margin. They poured it on tonight. Dominant showing in front of a crowd that loved every minute of it. And you know, this game could really be a defining one for what they can do when they are playing. And Pete, congrats on the win. I know this is one of the games you've highlighted on your social channels as being pivotal to your MVP case. How do you think you fared? I did what I set out to do. Got the win, played well. You definitely bolstered your case in this one. Thanks, Jen. Back to you, Kevin. Hey, Ma, how's it going? He's great. He's in really good spirits. Okay, what did the test find? That he needs surgery. But the prognosis, it's really, really good. Ma. Yes, they need to put a stent in, and I know it sounds scary, but the doctor said it's a very common procedure. And like I said, the prognosis is great. Yeah. I guess that's good. Can I talk to him? Oh, he's sleeping right now, honey, but I will have him call you in the morning. And how are you holding up? I'm fine, MP, and your father is fine too. Everything is going to be okay. Mom. I need you to keep reminding me that Dad's a fighter. Your dad is a fighter. I love mean you. right now, Ma, but thanks. I love you, honey. I love you too, Ma. Hey, we did that, y'all. Come on, baby. I told you he couldn't stop. All right, listen up, listen up, listen up. Look, before the game, I said we need MP to do his superhero thing for us tonight. Luckily, he brought his cape to the arena. Hey. MP, get up here and get this game ball. Come It's yours, on, baby. y'all. Hey, look, I just want to say thank y'all for trusting me to go out there and handle business. So bring it in. Let's close this night out nice. Hey, all for one on three. 1, 2, 3. All for one.
Let the bigs use their size, give them space to rebound and turn this into post. Unless it's a dunk, I want our team out of it. They're shooting a high percentage. That's not the game we play. I mean, it's just the roles of the bigs. Let's start cutting it out of our play calls. Okay, we'll do. And we'll talk about it later. Good. Just got out of that puppy stage, so it's nice to have him be a little more chill around the house. I remember my dog was that stage. Go over it again. So what'd you end up doing for dinner last night? Oh, she ate scrambled sausage with a very exciting breakfast. I had breakfast for dinner at dinner tonight and take some chicken. Hey, Dad. Hey. Yo, wait. If you're here, who's helping out with the restaurant? Your Uncle Rick. You know, yes, she's staying with us for a little while, just until the surgery. Uncle Rick? Yep. Really?
Dad, Uncle Rick can't make toast. Look, we've been having the same regulars for the last 20 years. I think we'll be just fine. All right. Yeah, Let's see. Thank you. So be honest. How are you feeling? I'm here, ain't I? Yeah, but I know you. Heck, I'm surprised they even let you fly. Oh, let me. Oh, no. You can't keep this up in the cage. Look, I'm good, man. I keep telling you that. I know, it's just... It's a lot for all of us. Yeah. Listen, if I'm not scared, then you shouldn't be. It is my chest they're cutting into, okay? Yeah, I hear you, but... in my mind... it's just causing me a lot of anxiety. I can't stop thinking about it, Dad. Whenever I feel like that, I just throw myself into my work. Keeps my mind from wandering. Yeah, I've been trying that. But you better. Because I don't want my last memory to be of you getting worked by SGA. Chill, What, too far, too soon? What? No, that was actually funny. Oh. Which is rare for you. Oh, no, come on, man. Quit playing. I'm always funny. Well, I got you courtside seats tonight. Oh, cool. Hey, just make sure you don't spill no drinks. I don't need them roasting you on the Jumbotron. Oh, no, wait, where you think you got those hands from? I got a steel grip, man. Come on. I know you got that old man strength. No. I was stronger than you when I was your age. Huh? Right? Yeah. Are you okay? Did they not test your brain while you were in the hospital? Hey, don't worry about my brain, okay? you got a game to win. And the MVP trophy to take home. Man, I hear that, Pops. Okay. Going up against SGA tonight. Yeah, that's my guy. He came on the show once before I even got drafted, so I always got love for SGA. All right. Does that make it hard to go up against him? For being friends and all? Nah, man. Come on. That makes me want to kill him even more, bro. Like, do you like losing to your friends? Absolutely not. Well, there you have it. Shay, I'm coming for you, baby. Nothing personal, as you know. I got mad love for you. It's just strictly business. Trying to get that dub, baby. MP out. क्या नतीजे से तो यूट्यूब लागत है ये
जेवण घे ऐकायचं तू जेवण घे मी थोड्या वेळाने जेवण घे ऐकायचं जेवण घे तू मी आपण घे किती वाजता येणार किती येणार फोडून बोलते किंमत करत नाही तुझ्यावर काय जेवणार नाही काय बोलली जाऊ सोडलं तुला नाही करणार आता जेवणार मजा नाही जेवायचं मला जेवण2K's lying about your overall. Don't believe me? Watch this. So I have a 99 overall my player, and he looks like he's maxed out, right? But when we take a deeper look, does that change? So I copied every single rating from his my career stats into the actual rosters, and I don't think you'll believe what we actually got. After copying every single stat, even with cap breakers, this man turned out to be only an 83 overall, and when we removed the cap breakers, he was only an 81. But being this mind blown, I refuse to believe that this was the case. So I asked myself, would badges change his overall? So after copying every single badge, he's actually a 95 overall, and then without cap breakers and having badges, he's a 94. So even though they're ripping you off for about 4 overalls, it's still pretty crazy that 2K's lying about your overall. Don't believe me? What? Hey. All right, I can do whatever I want to. Sweet, can I do it back? Yeah. Take that back. Oh, what the hell? Hey. The first time I did it, so I did it in high school. My high school coach was like, if you ever do that, you would never play in college. He said, don't ever do that. You would not play in no high division if you think you could do that. Really? My first year doing it in the league, I probably played average maybe 12 minutes, if that. I was averaging like 3 or 4 steals because it was so new in the league. Has there ever been a time when you went for it and you got like embarrassed a little bit? Like something? First ball, bro. my rookie year, I tried to do it. So he grabs the ball and told me, get your ass back. I got him in New Orleans. And if you watch the video or anything, honestly, I had open layup. I'm screaming at my back. Everything. Yo, my only goal, I swear that whole shit, I don't care if I made a shot or not. I gotta get this motherfucker. The first time I did it, so I did it in high school. This dog missed his owner so much that he didn't even notice this person wasn't his real owner. The moment he saw her, he became super excited and ran to her without any doubt. But then, suddenly, his real owner walked out of the room. At first, he looked completely confused. To make sure what was happening, he quickly started removing the disguise from the fake owner. When he finally discovered the truth, he looked completely shocked. So, he hugged his mom tightly, as if saying, I'm sorry, Mom. And in the end... Can you reach the door? Yeah, do it? Yeah, do it. Everybody's out of the way? Yeah. Oh, he's big. Can you reach the door? Yeah, do it? 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2, 2.
Yeah, he's in training though, so you can't say hi. I'm sorry. I know it's the worst. So we got a dog over there. I'm a dog trainer, and so both of our dogs are service dogs, but we're more doing like socialization training right now, where they just chill and coexist. Yeah. Yeah, he's in training. मी कुठले कमी वाटले You just got the NBA 2K26, or you just made a new build, and you're wondering the fastest way to get to 99 overall as fast as possible, but also maxing out all your badges, maxing out that build specialization, which gives you extra cap breakers and extra max plus 1s and 2s, and of course getting level 40 maxed out, getting all those rewards of VC and that extra cap breaker with the extra max plus 1s and 2s for that as well. And you would want some extra VC too, because who doesn't want extra VC? Well, I have a method that can get you all of these things on NBA 2K26. And yes, I'm already at 99 overall. I already have max badges. My build specialization is about to be maxed very soon, and I already have level 40 as well with a ton of VC. So make sure you pay attention to this video because I'm gonna save y'all a lot of time. And don't forget to drop a like, hit that subscribe button, and let's go ahead and get straight into this video because I'm not trying to waste no more time. With NBA 2K26 being new to all of us, you're gonna need help with the best animations and jump shots. And NBA2KLab.com has you covered with a bunch of free tools. But if you buy their monthly subscription using code H for 20% off at checkout, you get access to all their premium tools, ranking all the best to worst animations, but having the ability to have every jump shot's base and releases ranked in green window percents and speeds in milliseconds is wild. There's also a custom jump shot recommender where you can plug in your controller and it recommends you a jump shot for your controller and latency. Get started now by going to NBA2KLab.com and use code H at checkout. What is good, YouTube? It's your boy Henry, aka H, back at it with yet another banger. And as you can see, I'm on a 99 overall build, like I said in the intro. Like I said, we have max badges. We're doing really good on our build specialization. I'm also the president of the #2 crew in NBA 2K26, which is doing really well as well. And I thought this would be the perfect time to make this video, considering 2K26 just dropped for everybody, regardless if you pre-order or not. And I'm gonna make my second build for the first time. So let's go ahead and get on my 60 overall to show y'all what to do. And just like the people that are starting the game that are probably watching this video, I need to get my overall up. Of course, levels are gonna help too. VC is gonna help, and of course, build specialization being upgraded is going to help as well. And then getting those max badges is obviously a huge thing too. Now, really quickly, if anyone doesn't know what build specialization is, basically you can choose between finishing, shooting, playmaking, defense, and rebounding. Now, obviously, you have to qualify for certain stats, and under these certain things, you will have to do certain challenges goal by goal, and you can eventually unlock 2 cap breakers for that category. See how finishing says finishing cap breakers, you have to use that cap breaker in that category. And max plus 1s and max plus 2, notice how those also say finishing, you have to use in that category. So make sure you know that before upgrading your build, because that could affect your build a lot. So yeah, you can do finishing, you have to go through 9 challenges to get all the rewards, once again, challenge by challenge. So for example, under shooting, when I make 500 mid-ranges or 3-pointers here, they're not gonna count to the 1,000 at goal 8, I have to start over at goal 8, right? But yeah, you can do playmaking, here's all those challenges here. You can do defense, here's all those challenges here. And you can do rebounding, here's all those challenges here. Now on this build, I'm gonna go ahead and commit to shooting. I already have a lot of my shooting challenges done from my other builds, so they do transfer from build to build if you do the same specialization. So if I just chose finishing for this new build, I haven't progressed at all in finishing specialization. So I'm not going to have any progress towards it. But since my first build, I already started doing this, it does save the progression for it. So keep that in mind when choosing your first specialization. You probably want to choose a specialization that you know is gonna help your build, number 1, most importantly. Also number 2, that you're probably gonna use on some other builds as well. Now on this build, I'm a 60 overall right now. I do have plenty of VC because I was breaking some win streaks, and I also bought some VC to start the game. By the way, I got like 500,000 VC for breaking win streaks, which is insane. Anyways, even if you are 60 overall, really all you need is pass accuracy. If you have 6,000 VC, you get 71 pass accuracy or 67 pass accuracy or a little higher. 71 pass accuracy, that's all you need for this method that I'm going to show you, which is for 99 overall, level 40, extra VC, and build specialization, okay? So we're going to go ahead, upgrade the build to 71 pass accuracy. So let's go ahead and head to Streak Kings to start. Streak Kings is going to be your best friend for a lot of this grind. It is going to save you a lot of time. It is a lifesaver game mode in 2K26. Now when you walk in, you're going to be greeted by this guy right here. You're going to want to talk to him. Take a right to this court right here. There's 3 courts. There's one over there. There's one over there. You want to take a right. You want to go to this court over here because this is where the method is going to be the fastest and most effective. Then you're going to want to go up to this billboard right here. Now this specific method is going to help you get to 99 overall the fastest. It's not going to be the fastest method to get your badges maxed out, but it will help. I have another method that's going to help you get your badges maxed out the fastest later in the video. This is also going to be the method that helps you get to level 40 the fastest. It's also going to be the method that helps you get your build specialization maxed out all the way to goal 9. And this method's going to help you get a lot of extra VC, and who doesn't like extra VC? So once again, we're going to go to this billboard. There's a bunch of different AIs. The difficulty is super low on here, so that's a good thing. There's also other things over here, but you want to go to rewards. This is the key thing. There's a lot of different VC things that you can get at certain levels, and you can rack up some good VC in this. And there's some cool rewards. You know, you got the crown head, you got the big Shaq head, you got some Air Jordans, you got a vest, some decent clothes, right? The 3D glasses. But there's also season level. शिवालीला की ते हे होणार अडान छावण्या गेला तुम्ही
level XP that you can get. And this is nowhere else in the game. Like, you can't get this season level XP anywhere else. So this is huge. Also, there's this sneaker head thing at level 30 that you can literally wear on your head. I'll pop up a picture on screen. It's kind of goofy, but I know some people are gonna mess with that. But anyways, you want to level through this all the way to level 30 or level 40 as fast as possible. And you can get a 5 times multiplier towards these levels over here at the rewards if you unlock this guy right here at the top, and you have to beat 10 bosses to unlock him, which is just 10 of these guys. So if we beat 10 of these guys, we'll choose 2 of them that are gonna be good for us after those 10 games to play against the worst player to get that 99 overall, to get that VC, to get the build specialization as fast as possible. But first, we want to play the 10 guys to unlock those good teammates and to unlock this guy for 5 times multiplier to get through these rewards as fast as possible to also get levels in VC, okay? Got it? Good. Okay, let's get started. Now, if you don't really care about these rewards at the end of the section, the most 2 important guys that you want to recruit as fast as possible is gonna be Dr. Dunks and Captain Galactic. These 2 guys are gonna be the guys that you throw lobs to, and they're gonna catch every single lob. So go ahead, choose Dr. Dunks, get your teammates in here, start the game, and just beat this guy. And when you get into the game, you're gonna get this cutscene. Just get this every time it starts at the end or the start of every game. And then you're gonna get in the game against him, and all you have to do is just win this game. Now, if you are 60 overall and you're lower, you're gonna want to get into pick and roll, get your teammates to help you out here. But if you are high overall, you can literally just shoot over these people. It's on super easy difficulty. But yeah, just do a pick and roll every time. You're gonna score every time and just try to get stops. The difficulty is very low, like I said, so this shouldn't be that hard. Now, something to notice for your future games to end these games faster is that there is kind of a shutdown bar at the bottom. When that blue bar fills up, usually you have to go up by like 9 or 11 points and finish the game with a flashy play. So that could be a crazy dunk, that could be an alley-oop, that could be a fadeaway 3, something, an ankle break, something like that. And then the core will shut down and it'll actually end the game before 21. That's gonna be super key to ending these games faster. We're gonna talk more about that later when we unlock the guys that we want to unlock. And then we finally won the game. That's gonna shut down the court. These are gonna be the closest games you have, the longest games you have, because once you get the team that you want, these games are ending like literally 60 seconds max. Then after you beat him, you want to play against this guy right here. So you're gonna match up against him. You're gonna choose Dr. Dunks as your teammate, and you're gonna go ahead and win against him as well. Now when you play captain, same thing, but call for screens from Dunk. Don't even risk the lobs against these guys. Just hit him on the roll. He's gonna score every time. Now the farther out you call for the screen from, the more likely it is for these pick and rolls to work. So try to call it like half court or even behind half court. Also, another thing that's gonna help, try to not guard Captain Galactic. So click your right bumper and then just guard X or whoever the center is, okay? Then you're gonna go ahead and win. And now you have unlocked Captain and my boy Dr. Dunks. So now you have Galactic and Dr. Dunks unlocked. Now you have to beat 8 other different bosses. So go ahead and do that. Once you finish that though, you want to go ahead and play Donnie Dribbles. Now Donnie Dribbles is the only person you can play against out of any of the street ball courts where all 3 players are short as hell. They're all like 5'7", 5'9", 5'10", okay? Now you want to be matched up with Gru. So go ahead, put your match to Gru first. Then you want your teammates to be Dr. Dunks and Galactic. You want to play this over and over and over after you unlock Galactic, Dr. Dunks, and you've beaten the 10 bosses, okay? So let's go ahead and go into this matchup and show you exactly why you want to play this matchup over and over and over until you're 99 overall, have your badges, even for your build specialization, and until you're level 40, okay? So we get into the game, look at how short all of our opponents are. Now the reason we're on Gru is because Gru is the point guard. And this is why this method is so good, because you can leave Gru wide open every single play. Even though he made that midi, you're gonna see what I mean in a second. You're gonna want to leave Gru wide open every single play. He will shoot it, and he will miss it every single time. So I'll show you what I mean by that. So we leave Gru wide open. He's gonna shoot the 3 immediately. He's gonna miss it every time. And the best part about this is he's point guard. So every time he's gonna bring the ball to the court after you score, he's gonna walk up the court and just shoot the 3 immediately. So the possessions are gonna go by super fast. No one's gonna pass the ball to anybody on his team. He's just gonna walk up with it. He's just gonna shoot it immediately. He's gonna miss every time. Most of the time he's gonna attempt a 3. That was a midi right there, but he missed it anyways. And then you want to set a screen from half court. Sometimes they'll play good defense on it, like there. All you gotta do, just reset, set the screen, and you want to throw lobs every single time. So right there, they defend it well 2 times in a row. 3, 2, there we go. We got the wide open lob. We get it. You want to throw a lob on every single possession. This is gonna give you the most my points for your progression to 99 overall. Then Gru is gonna pull up. Once again, he's gonna miss. We're gonna call for a screen from my boy Captain. Run around it as fast as possible. This is what you want the defense to look like every time you run around the screen. Just run around it wide and fast. Always guard Gru. Look, I'm gonna leave wide open. Even if he doesn't bring it up like right here, he's gonna shoot the 3. He shoots it early every single time. Call for the screen from behind half court. Run around it. Just throw the lob. There we go. Come on. I also recommend putting on a takeover that like pluses your pass act. Now I do have custom takeover. If you want to know how to get custom takeover, I made a video on it. Go check it out. It's on the channel. But yeah, I have plus 15 pass accuracy with takeover, so that just makes the grind even easier with the 99 progression. I mean, Gru has not hit a shot. I've never seen Gru make a 3-pointer. So if Gru makes a 3-pointer on you, like, I don't know, you're just unlucky. But another big reason why you want to play against somebody that's not going to make their shots is because the less they make their shots, the faster these games end, because you can end them before 21. So right here we're at 12-2. The crowd's like running out on the court. That means the next bucket we score. If they don't score, the game ends. Now, yes, maybe you're like, okay, maybe I want the game to go all the way to 21 so I get more lobs. And yes, but the more games you finish, the more level progression and VC you get as well, because each game's like 400 VC. Once we get to this streak that I'm about to talk about in a second, you're gonna get a lot of level progression. And this is also a good way to get your takeover progression for custom takeovers, which I haven't even mentioned yet. So the game's gonna end, as you can see, we shut down the court at 14-2. And the only reason they scored 1 shot is because Gru had like a wide open close shot maybe that he made to start the game. And then this is what your stats gonna look like every time. So you have a bunch of assists. Now I don't have this build upgrade, but you're gonna have bad progression right there. You're gonna take over progression right there, but I already have custom takeovers. 360 VC plus every single game, maybe 340 sometimes. Now I did say my points have been reached, but that's because I've gotten to 99 overall on another build, so my shit can just go to 99 immediately. But I'm still gonna be on the 60 overall just to show you guys that you can do it on a 60 no matter what your rating is. But you can get up to 23,000 my points doing this method. Just try to get to 11 assists and then hit a 3-pointer with the last shot. Regardless, try to get to 11 assists every game if you want just my points. Now we go back to the board. You're gonna want to set up the game like that every single time, but you want to have the 10 bosses unlocked so you have this guy unlocked. Because when you do that, you're gonna unlock this thing where if you go on a 15-game win streak in here, you get 5 times progression for this menu right here, which means you're gonna get to the level 40 in this menu 5 times as fast, meaning you're gonna get all this VC 5 times as fast, meaning you're gonna get all these season XP rewards 5 times as fast, and you're also gonna get to level 45 times as fast, okay? Now make sure you also have XP coins activated while you're playing this, because that will help as well. You may as well get double XP.
so you get there twice as fast. And at one point, you will be on the 15-game win streak for the thing, which 5 times XP through that season XP level 40 thing, and you'll have double XP going to your XP. So you're gonna get level 40. You're gonna fly through to level 40 doing this method. Now I went ahead and loaded up my 99 overall so I can show you what it looks like when you have all the bosses thing unlocked. You're gonna see this thing pop up right here, King of Pivot Point. And if you hover over it, look at it. You have to, once you leave Streak Kings though, the streak resets. So you have to stay inside of here. But you see when you go on a 5-game win streak, you get the 1.5x, 15 wins. You may get 5 times XP if you go on a 15 streak over here. So literally all you have to do is play Donnie Dribbles, match yourself up with Crew, play with freaking Captain Galactic and Dr. Dunks, and beat these 5-7 dudes 15 times in a row, and now you have the best method to get everything you want. Because once again, you're gonna be flying through these rewards 5 times as fast. And I haven't even been taking advantage of this method too much. I've been playing mostly online, but this is gonna help a lot. They're probably wondering, okay, like, what about the build specialization? Yes, this is the easiest place to do build specialization as well. So maybe you want to take a break from throwing the lots of getting the XP. If you have shooting, specialization, defense, rebounding, playmaking, finishing, whatever, this is gonna help you a lot. So like shooting, for example, I do shooting. This is a really good one for the goal 7 I'm on. Win 100 games with 5 or more jump shots made in each win. So I can literally just shoot over these guys because they're super short 5 times a game, do lobs the rest of the game, get a bunch of my points, get the VC, get the level progression, and get the streak going so I get VC and more season XP as I go on. And if I do that, now I'm getting to 99 the fastest way, getting to level 40 the fastest way, getting through my build specialization the fastest way, getting takeover progression for my takeover tokens to get custom takeover, getting badge progression, and getting some extra VC. So once again, we're gonna show how easy it is to grind build specialization in here. Maybe you have a max build, maybe you just care about build specialization more. Look at this guy, he thinks he's contesting me. And not only that, it's like on a rookie. I'm gonna make that shot every single time, and they're never gonna get a contest. Y'all know the right contest is already hard in this game. And now against AIs that are short as hell, it doesn't matter how tall your build, you're gonna easily be able to shoot over these people, and the games are gonna end super fast. Like you're gonna be able to shut down this court in like 4 plays. And for example, the build specialization goal that I'm on, where I need 5 or 5 jump shots each game to get my build specialization going, this works perfectly. Now something to keep in mind though, the game can't end unless you do something flashy on the last play. So Guru's gonna miss again. I want my 5 jump shots for my goal, so I'm gonna purposely not do anything flashy. I'm just gonna shoot my middies. So now it's 11-0. But now the next point, when you see the crowd like get on the court, the next point, you're probably good regardless. But sometimes if you want to finish it like at 11 points, sometimes it'll finish at 9 at a 9-point lead. You want to shoot like a fadeaway 3, or you want to shoot like a lob. But I want my shot in, so I'm just gonna shoot a fadeaway step back over this guy, and that actually didn't end the game because that wasn't flashy enough. So I know back fades will work. If you do a spin jumper, I'm pretty sure that works too. This one should just end it no matter what though. If I just run and fade, because we did it so many times in a row. Yeah. So shut down at 16-0. The game just ended what? That took like 45 seconds. And from that game, we're gonna get my points. We're gonna get closer to our streak to get the 5 times progression to get extra season XP and VC. We're getting our build specialization done at the fastest rate you possibly can in the game. We're getting badges too. And we're also getting the takeover % up for takeover tokens if you still haven't unlocked takeover or custom takeover. And we're getting extra VC just for playing this too, 400 VC a game. So once again, make sure you beat the 10 bosses. Make sure you always have Dr. Dunks on your team. Make sure you have Galactic on your team. Make sure you stay in here, get your 15 win streak. Make sure you get through all of these to level 40. Make sure when you're playing this, you have XP coins activated, and make sure you have your build specialization in mind, or at least, you know, your overall progression in mind when playing this. But anyways, let's go ahead and show you an even better method if you just want to max out your badges. You know, this is obviously the thing to play because there's like 5 different things you can progress super fast in here. But if you want even more badge progression, I got a spot for you. So my builds do have max badges at this point, but just to show you guys where to go, you can go to this open court place by the Gator facility, and this can give you a crazy multiplier for your badge progression in here. So you want to go over to this board right here. You see it says 3 times badge multiplier. Team makes 6 assisted baskets. So it's giving you a challenge every time, so you can't really change anything here. So all you gotta do is just start game. And just pops up a little goal. So we have to get 6 assisted baskets. And this is as a team, so they don't we don't have to like, I don't have to pass the ball or anything. Like I'll just have Halliburton pass me the ball. Well, actually, John's gonna pass me there. But I know Halliburton definitely has some good dimer badges, and this difficulty is super low on here, so you can just easily shoot over people. Now, if you're more of a center build, I would set a screen for Halliburton, call for the ball on a pick and roll. But if you can shoot the ball like I can, I would literally just go spot up. Preferably when Halliburton has the ball, doesn't really matter too much. Even in the corner if you like, so I'm just gonna call for the ball right here, and I'm just gonna shoot over Donovan Mitchell. And you see that counts as progression because it's just team based. We're at 2 out of 6 assisted buckets as a team. So now the challenge is done. The AI just got an assist to the AI, which also works as well. So now we just have to finish out this game. And then when the game finishes, obviously my badges are max, but you're gonna get 3 times progression for that. I mean, for just playing one game. So I would probably actually go for whatever badges you need. Some, you know, legends, you need set shot specialist, catch and shoot, shift, you shoot a fade away. So yeah, this is a good method to max your badges out easily. Now, if you need all of these things at once that I'm talking about in the video, I would definitely prefer the other method. Now, keep in mind, we do have rebirths, okay? So I would not make your second build until you reach 95 overall. Because when I did that, or at least 99. When I make a new build now, since I didn't make my second build to 99, my max progression go to 99. But look at, I upgrade my midi to 90 mid-range right here, go to my badges, and I get all, like if a badge goes to gold, it's automatically maxed because I have the gold rebirth thing. So please try not to make your second build until you hit 99, at least 95, so you can get the gold badge thing, but preferably 99 so you don't have to go through this grind again. And for anyone that doesn't know, there's 4 different rebirths. You can get silver rebirth, gold rebirth, Hall of Fame rebirth, and legend rebirth. So like I said, it's very important to hit 95 before making that second build, and you can see all the rewards for each of the rebirths on the screen right here. And then if you haven't unlocked a rebirth quest yet, you should just automatically have it, but just to be safe, you're gonna want to talk to Ronnie 2K. Now it doesn't show up on my screen here, but he's gonna be right, yeah, no, actually I think he's just standing, no, yeah, no, that's not, but he should be, his AI should be just standing like right around this area here, so make sure to talk to him, get your rebirth quest in, just to be safe. Now this video will help you out at all. I also posted a video on how to get all the cap breakers, yes, 13 cap breakers to start 2K26, and I also posted a video on how to get तीन सौ शेट क्या करायचं 3 मटन 1 फुल किंवा पार्सल आणि 3 मटन कर लिंबू देतो दोन चपाती 3 लाख माझं नाही माझं थोड़ी चटनी मिर्ची दे दो चटनी मिर्ची तेल लावून भाजून चपाती थोडं
शेट क्या करायचं 3 मटन. Is it possible to break the net in FC26? So to find out, we're taking it. काम करते करते चौथी बार मैं बैटरी स्वाइप कर रहा हूँ. इस बार बैटरी स्टेशन देखो, फिर यहाँ पे लगाता हूँ. कर ले जल्दी से कैच. ये हुई ग्रीन. अब इस ग्रीन के साथ में भैया बप्पू के लिए आप पहले यहीं पर खा लो. ये तो लगता है बच्चे का बप्पू से बहुत प्यार है. ये आपको हमने पैक करके सारे थाली ले जाते हैं यार. अच्छा बोलो बोलो बोलो. इसमें फट देगी गरम है. अच्छा जी ले भैया यार. हमारे बापू जी को मैसेज कर बुला देना. भैया बप्पू के लिए आप पहले लाइव चल रहा है ना, इसका मतलब काट नहीं सकते आप, है ना? हाँ, इसका मतलब कैंची भी चल सकती. अमेरिका ने हमला किया है, हमला ईरान पर हुआ है, कुटापा जो हो रहा है वो इजराइल का हो रहा है, बिल्डिंगें लेबनान की गिर रही हैं, बर्बाद दुबई हो गया, बेइज्जती इंडिया की हो गई, चढ़ाई पाकिस्तान की हो गई. ये क्या हो रहा है यार? बाकी देशों में जितना तेल का दाम बढ़ा है खाड़ी में जंग शुरू होने के बाद, हिंदुस्तान में उससे बहुत कम बढ़ा है. और कई महीने तो बढ़ा नहीं था, अभी बढ़ा है. जितना कि दुनिया के बाजार में तेल का दाम बढ़ा उससे तो बहुत छोटा हिस्सा इंडिया में बढ़ा है. देखो जिस तरीके से आप काउंटर कर रहे हो ना, ये तो वो बात हो गई. एक बंदे से किसी ने पूछा कि जंगल में अगर तू जाए तो तेरे पीछे शेर पड़ जाए, कहते मैं उसको गोली मार दूंगा. कहता तेरे पास कारतूस ना हो, कहता मैं बंदूक का बट्टा मारूंगा उसको सर में. कहता अगर बंदूक ना हो, कहता मैं चाकू निकालूंगा गला काट दूंगा. कहता तेरे पास चाकू भी ना हो, कहता मैं जेब से लाल मिर्ची निकालूंगा शेर की आंखों में डाल दूंगा. कहता तेरे पास लाल मिर्ची भी ना हो, कहता मैं भाग के ना पेड़ पे चढ़ जाऊंगा. कहता अगर शेर तेरे पीछे पेड़ पे चढ़ जाए तो उसने कहा जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले तू बता तू किसकी तरफ है? तू शेर की तरफ है या मेरी तरफ है? मैं किसी की तरफ. मैं मोदी जी के खिलाफ की बात बोलता हूं, काउंटर करने लग जाते हो. लाइव चल रहा है ना, इसका मतलब काट नहीं सकते आप. Imagine scoring 91 goals in just 1 year. Sound impossible, right? Well, that's exactly what Lionel Messi did in 2012. While most footballers dream of scoring 30 or... This guy found the most genius way to force his team to get rid of it. James Harden is one of the greatest scorers in NBA history, but he has one very unusual habit when he wants to trade. After spending 8 years with the Houston Rockets, Harden decided he wanted out, but the Rockets refused to trade him, so he took matters into his own hands. He showed up to training camp looking so unbelievably heavy that nobody could believe what they were seeing, forcing the Rockets to get rid of him. But within days of the trade going through, Harden looked completely normal again. Fans immediately agreed that Harden had been wearing a fat suit the entire time just to get away. This guy found the most genius way to force it. मुंबई में चप्पल बनाने वाली कंपनी ने मिट्टी और गोबर से एक बिलबोर्ड बनाया और जैसे ही बारिश आई ना वो बिलबोर्ड जलकर पूरा खराब हो गया. अब ऑब्वियसली लोगों को लगा भाई यूनिटनेस के चक्कर में कोई कंपनी इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती है. लेकिन कोई ये बेवकूफी नहीं, पूरा का पूरा माइंड गेम था. देखो एक चीज सोचो, आपके घर में जो पुरानी चप्पल पड़ी होती है ना वो खराब होने के बाद कहां जाती है? पुणे में, फिर लैंडफिल में और उसके बाद सालों तक वहीं पड़ी जाती है. क्यों? क्योंकि ज्यादातर चप्पलों में प्लास्टिक का यूज होता है और प्लास्टिक को पूरी तरह डिग्रेड होने में सैकड़ों साल लग सकते हैं. मतलब सोचो हम चप्पल तो कुछ महीनों के लिए पहनते हैं लेकिन वो सालों साल हमारे एनवायरनमेंट को खराब करते रहते हैं. और यही रीजन था कि वो बिलबोर्ड जानबूझकर ऐसा बनाया गया था ताकि लोग अपनी आंखों से देख सकें कि इस कंपनी का प्रोडक्ट काम कैसे करता है. मतलब यूज करो फेंको तो कुछ टाइम बाद वो मिट्टी में मिल जाता है बिना कोई टॉक्सिक वेस्ट छोड़े. और यही पूरा कांसेप्ट है कि उस ब्रांड का जो इंडिया की पहली बायोडिग्रेडेबल फुटवेयर ब्रांड है. मुंबई में चप्पल बनाने चावल, दूध, कांदा, हरी मिर्ची डाल या तो दही डाल और उसको पैक करके रखो. सुबह उठ के बैठ के उसके ऊपर डाल दे, शिमला मिर्च, जीरा, करी पत्ता, लाल मिर्ची, हरी मिर्च जो भी डालेंगे, सॉल्ट एंड दैट. सुबह साथ में दही के साथ में चावल लिए तो चावल दही के साथ बन गया और कांदे का उसका पूरा खुशबू और ब्लड के लिए मस्त. चावल, दूध, कांदा, हरी मिर्ची डाल या तो दही डाल और उसको पैक करके रखो. सुबह उठ के बैठ के उसके ऊपर डाल दे, शिमला मिर्च, जीरा, करी पत्ता, लाल मिर्ची, हरी मिर्च जो भी डालेंगे, सॉल्ट एंड दैट. सुबह साथ में दही के साथ में चावल लिए तो चावल दही के साथ बन गया. After this girl asked for 2 slices of pizza, she came across the funniest reel. Let's write them. Okay. Look at these. It's actually Brady. Approve them.